Right, welcome back once again to Rawalpindi Cricket Stadium. This is a double-header day, the second game of the day and match number 10 of Barrier Town Champions Cup T20. It's Lake City Panthers taking on UMT Markhors. Well, we had an exciting game, the previous one. Allied Bank Stallions scoring 190 for the loss of 4 wickets. A great innings by Hussain Talat and Mohammad Mohsin scoring 50s each. Ramiz Jr. getting a couple of wickets. And Anglo Dolphins in the end fell short of 5 runs as they scored 185. Farhan scored 59. Swan getting 2, Mehran getting 2, Ali getting 2. And with that win, Allied Bank Stallions have gone up the order right at the top. 4 games, they've won 3 out of them, 6 points. UMT Markhors at number 6. Nurpur Lions not that far at number 4 with points. 4 Lake City Panthers with a couple of points, and Anglo Dolphins winless and without points too. Right, Marina Iqbal, second game of the day. Sharjeel Khan will be in action for Panthers. Lots of superstars will be involved. Haider Ali is found some form. Osama Mir also in the camp. Yeah, it's a very balanced side. A lot of players who are in form. Sharjeel would be itching to go back. Akif has been decent. We have seen Sarwar with the bat, also with the ball as well, but he made an impact. So it's going to be a good contest among these two teams because it seems like it's evenly balanced. Crowd coming in, surface is a decent one. We've seen something for everyone. There was purchase for spinners, fast bowlers coming in, getting that bounce and runs. Well, they're always available out on this square with a good quick outfield. Under lights, it's going to be a good contest between ball and bat. Yeah, rock solid. These services has been brilliant throughout the tournament. But first things first, let's see what happened at the toss. Shah Faisal is out there with the 2 captains. It's time for toss here, match number 10, and it's coming to you between Lake City Panthers and UMT Markhors. I've got both the skippers ready. Haider Ali, Iftikhar Ahmed, Iqbal Sheikh will see the proceedings. Who's got the coin? Haider will give it a flip. Head. Heads is the call. It's tails. Haider Ali. क्या करेंगे? सर बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट पहला मैच आपने देखा, कंडीशंस को कैसे असेस कर रहे हैं? क्योंकि आई थिंक पेज थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्लो साइड पे है और सेकंड इनिंग में थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, ड्यू का फैक्टर होगा और गेंद अच्छा, मुझे मेरे हिसाब से गेंद अच्छा आएगा बल्ले पे। और जाहिर है कि जिस तरह टीम अब जा रही हैं, टीमें अपने रिदम में आती जा रही हैं, कॉम्बिनेशन सेट होते जा रहे हैं, तो यहाँ से अब आपको जीत का सफ़र शुरू करना होगा। जी इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे, प्रायोरिटी यही है कि पहले हम जीतें और इंशाल्लाह हमारा कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और यंगस्टर्स खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह पूरी एफर्ट करेंगे। और एक चेंज तो पता लग गई, शादाब की जगह आप आए हैं, और चेंजेस बताइए। 3 चेंजेस हुई हैं, शादाब की जगह रिजवान आया है, इब्तसाम और अली रज़ा आउट हुए हैं, उनकी जगह एक वसीम जूनियर आ गए और इरफात मिनाज आ गए। चलें हैदर अली, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड गेम। आप टेबल के टॉप पर हैं, टूर्नामेंट के अभी जो सबसे बेस्ट टीम आप नज़र आ रहे हैं ऑन पेपर, लेकिन ये नया दिन है। हाँ बिल्कुल, आपने हर दिन जो है अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तब आप टॉप पे भी जाएंगे और आपने चैम्पियन भी बनना है, तब बनना है जब आप हर मैच में, हर सिचुएशन में आप बेहतर करोगे तो। और ज़ाहिर टॉस आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन कैसा देख रहे हैं कंडीशंस को? हाँ बिल्कुल, कंडीशन तो बिल्कुल मेरे ख़्याल में इससे पहले भी 190 हो गए और विकेट तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है और हमारा भी कोशिश यही है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट दे दें। और शाम के मैच में थोड़ा सा ठंड का फैक्टर आता है दूसरी इनिंग्स में? हाँ बिल्कुल, ठंड का तो आता है, मगर आप एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ता है। और टीम चेंजेस के बारे में बताइए। नहीं, सेम टीम है। सेम टीम? चलें इफ्तिखार, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड गेम। So the news from the center is that Lake City Panthers has won the toss and they've decided to have a ball first. Right, few people have come in to witness this game. A very exciting game in our hands. UMT Markhors undefeated, the 2 umpires for the game.
It's Faisal Afridi on the right and Mohammad Sajid on the left. The two teams, well, UMT Markhors, they're a very settled side. They haven't done anything to them that's unchanged from the last few games now. Lake City Panthers, Marina. 3 changes for them. Seam Junior coming in. Arafat Manas, a good all-rounder. And Rizwan Mahmood. They'll miss out, I think, Ali Raza and Shadab. Those are the two men that have a huge impact on the game. But nonetheless, they're also a balanced side. And they're really leading them into another match. Yeah, Lake Panthers won the toss and decided what every captain mostly has done in this ground, to bowl first. They like to chase down this target, and Haider Ali, the captain, he suggested that he's expecting some dew second time round and that he will get the benefit from that too as a batter. So they are bowling first in this game. They've just won one game in this tournament so far. They would like to get another one, and if they are able to get the win against this big side, the UMT Markhors, so that would be a huge confidence booster. But it won't be easy against these two early on, Fakhar Zaman and Khwaja Nafe. And Nafe has been in a sublime form. Fakhar did get some runs, but initially he was quite jittery. So that's one area where the Panthers would be looking for to get him out of the equation quickly, because once he settles in with Nafe on the other end, things can change quickly. So I think that that's one area within the power play where Lake City Panthers would like to utilize the new ball and put pressure right back on UMT Markhors. They did had some trouble with their batting lineup. It hasn't been up to the mark except for one or two batters. We saw Khushtil Shah. He was brilliant the other day, but up the order except Nafe, I think these two have been performing. Other needs to step up. And they've come in numbers to witness this game. Good crowd in, and that is because there are lots of superstars playing, and one will face the first delivery, that is Fakhar Zaman. They already have witnessed a great game of cricket, the previous one. They're expecting a nail biter again. Fakhar Zaman, those numbers, wow, impressive. Strike rate of 134 with an average of 27, 6,774 runs. Best of 115 for Fakhar Zaman. Yeah, we all know the reputation he has. Khwaja Nafe, he's such a natural player, effortlessly plays all those attacking shots and has a huge range of shots. He can nail you towards the onside, also plays some exquisite drives towards the off. Mohammad Umar, 12 wickets. Best of 3 for 22. Economy on that little higher side, but still very young. Lots of cricket still to play. He will be starting off with a slip in place, short fine leg, deep square leg in place, and a fielder at deep third. Let the fireworks begin. Okay, Faisal. Right arm bowling over. Play. That's why not a good start. Looking for some swing. Not the right line, and just they're off to the mark. Straying down the leg, Umar. He is a decent bowler, but bowling against Fakhar Zaman, it's not always easy, because back of the mind you do have the image that Fakhar Zaman has and the presence. Mohammad Sajid, the on-field umpire, with Faisal Afridi. Kaisar Waheed, the TV umpire. That's Faisal Afridi, former first-class cricketer, fast bowler from Sargodha. That's good. That's where he needs to be most of the time. Mohammad Umar. Yeah, fourth umpire, Imtiaz Iqbal, with match referee Iqbal Sheikh officiating this game. Yeah, Umar is more comfortable against right-handers. He's a genuine outswing bowler. That was a perfect delivery in the corridor. Nafe, it's actually hard to pick out
any weakness yet. Loves to come on to the front for easy off the back foot as well against spinners. Nicely guided towards third. He's just 22 years of age. Haider Ali is already making a name for himself. We saw him play a good inning at HBL PSL, but that was just one inning. He's been consistent in this tournament though. I think he's learned since that time, and that's good if you keep on improving and keep on learning at this age, and the opportunity has been provided. Also the experienced players around him, that has actually helped him to find his own zone. Down the track, takes the charge straight away for Zaman. Couple of bounces into the fence. I was very watchful in the previous game. He said that's enough. There is a crowd in to watch him play, and he better entertain them. Down the track, great swing of the bat. He forces that for a boundary. That's a good start. Panthers, be careful. He seems to be in a mood. Wrong line to the leg stump. Having fine inside the circle, got to be very careful with that line in length. It's not going to be easy for Umar. That's what he likes, just to shimmy. Make sure that he stays just a little bit away from the ball to free his arms. Much in control because of that steady head. Umar will naturally bring the ball back into Fakhar Zaman, and he loves that angle. Risty for 4. It's already a great start for Fakhar Zaman. Finding the middle of the bat again. Yeah, that's it. The angle coming into him. Easy pickings for Fakhar Zaman. Just off the hips. Umar, he is getting some movement, but the line is wrong. You need to start probably from off stump or somewhere around middle and off, and then make sure it ends around middle. Otherwise, Fakhar, it's too easy for him. He loves to play into the onside. Just onside. It's very good with over extra cover too. It gets very difficult, Marina, to bowl to somebody like him. The range he has, but yes, I totally agree. He favors that onside. That's where he likes it. Again, wrong line, punished. That's a very ordinary start by Umar. 15 runs coming off this first over. UMT Markhors are off to a flyer. 15 for none. Crowd coming in with smiles on their faces. It's a bright sunny afternoon. Perfect weather to play and witness cricket. And they're up for a good contest with Fakhar and Nafe in the middle batting. Ahmad now will share the responsibilities. He needs to do some damage control. He's an experienced one. Economy of 8.7. Ample experience for him to maneuver with, averaging 23.7. Right now, Nafe on strike. No slip, but a fielder at mid-wicket. Punches it through the hands of the fielder. That's the force of this boy. And he times it with the force. Just races away. Well, normally in T20 cricket, there are not many players left who can play such powerful back foot punch. I've missed those, but thanks to Nafe. It's just a sheer class on that occasion, just waiting for the ball,
playing it closer to the body, right out of the middle of the bat. He's got his technique on spot on that occasion. Have a look at that. Steady, slightly covering the line of... Oh no, oh no. What have you done? It's straight to the fielder. He had the opportunity, got the start too. Wasim Jr. getting a nice, simple chance. Khwaja Nafi goes back. I was just admiring him. All he had to do would probably repeat the shot he played earlier. It was too high on bounce. Wasn't able to go through that and force that shot into the leg side. Straight up in the air, an easy catch. Khwaja Nafi, he will be disappointed. Gone on 3. UMT Markhors 1 down on 17. The boy from Dera Ghazi Khan, Mohammad Shahzad. It's a great opportunity for him. 118 runs, strike rate of 109. Still early days, highest of 28. Misbah Ulaq, the mentor, speaks really high of him. This will be a difficult walk to the dressing room. He's dejected, disappointed, sad. Down the track, smashes it through covers. Flat batted it for 4. What a start. He seems angry, Shahzad. First delivery he faces. Just dancing down the track. Width was given by Ahmad. And straight away, created a little bit room for himself to free his arms and smashed it through the covers for a boundary. What intent. Beautiful. That's what you want to see. That's why the crowd is here. Entertainment. Good comeback. Good comeback. A bit of a swing for him. But Khwaja Nafi would be so disappointed with this shot that he attempted. Just wanted to go hard at it. Just wanted to throw the ball out of the park. Not to be the pace that he likes, wasn't there. I wasn't able to lift it with a straighter bat. Probably a horizontal shot would have worked, just getting on top of the bounce. Ahmad is not that quick, so you can manage to do that. Just get in line and connect it right in front of your eyes. The look that Fakhar Zaman gave him right at the end. He was furious. Fakhar Zaman was furious at him just by the look, I tell you. Being the senior member on the other end, who's off to a good start. There was no need of attempting that shot. Because as a senior partner, if you get going, not this one. This is good. That is quickly gone to Shahzad. So Fakhar Zaman being a senior member, being responsible. He's appealing for it. He's appealing for it. He's not going to get it. Faisal Afridi says calm down. It's the end of the over. 2 done, 21 for 1. The youngest fan ever. They love cricket here, this part of the country. They come in numbers, even though it's pretty cold, still come in numbers.
Just one over for Mohammad Omar as we see Mubassir Khan now, the off spinner, coming into action. 14 wickets to his name. Right, Marina Iqbal, what happens once you have a senior member like Fakhar Zaman scoring runs and your youngsters keep on hitting those false shots or wrong shots and keep getting out? What happens? What's the message? Yeah, you do get angry because definitely as an opening player there's always a plan, always a conversation going on. And with Fakhar, as we all know, that he's quite proactive there, feeding probably Nafe which bowler to pick, which area to hit, and backing him, but not overdoing it. Now just creating the room down the track. We've got protection. We've seen Fakhar do that quite often in the previous game as well. Just hopping and going down the leg stump, creating room for himself. And there was a certain opportunity, Nafe. It's not always that as a youngster you have a chance to bat with someone like Fakhar Zaman, who has dominated international cricket, and especially this format. So you need to listen to him. Yes, you need to back your instincts, but listen to your senior. Talk about opportunities. Kamran Muzaffar has the opportunity to eat biryani here. Excellent. We've been kept here in the commentary box. He has the opportunity to eat it. It's all about grabbing the opportunities, I tell you. He's grabbing, look, he's grabbing the opportunity, this man, right with next to us, Marina, and we're hungry. Yeah, the audacity. Wanted to heave this one, not to be. End of 3 overs, 23 for 1. Twenty-three for 1 after 3. Panthers winning the toss, electing to field first. They got 1 wicket. The dangerous Khwaja Nafe is back. But there are too many dangerous batters. Shahzad has started off nicely. There's Iftikhar Ahmed, Abdul Samad, Mohammad Nawaz, Sarwar Afridi. They've got plenty of hard-hitting batters in their lineup. I think this seems to be the plan. Even Fakhar Zaman is giving himself room, looking to provide that arm extension, looking for that. Yeah, I do agree. They're all attacking players. But the problem is to adjust and understand your role. Because all of them, they like to take the attack back to the bowlers. But it's not always that one-dimensional cricket would work for you. So even in between them, someone needs to steer the innings, needs to play out of the character. So it's important to understand the match scenario and your own role as a batter. Moving around, not helping him. You understand your own game, yes, I do totally agree with you, but you got to also understand that this is a huge opportunity. Got to make use of it. Somebody like Shahzad or Khwaja Nafe playing under the mentorship of Misbah-ul-Haq, I think this is huge for these youngsters. And if you're not able to learn from them, if you're not able to execute what they're telling you, this will be of no help. So as a cricketer themselves, you need to value it and learn from it. Picks it up and picks it all the way, I guess. For a 6. That's the talent from Dera Ghazi Khan. The only difference was
On this occasion, Shehzad did not shuffle towards the offside. He stood there. Ahmad again repeating that line. And because he stood there, he was able to create a stable base and help the ball on its way. Powerful wrist coming into play. And Ahmad is furious with himself. Yeah, how important is that stable base? You use it quite often. So important to have that solid base. Makes the game look simple if you have a solid base. But these modern day batters, they move around a little too much, I believe. The importance of solid base. I don't mind moving around, but just before the ball comes out of the hand of the bowler, you need to be there, stable. Just keep your head in right position, because most of the young batters, they confuse power from moving around, hopping, and just the arms and those biceps coming into play. No, it generates from your base. It generates from your thighs and a solid waist. That's where you generate the power. Good bowling, smart bowling. Changing the pace, realizing that Shehzad is looking to go after him, so is not being predictable. Yeah, just one maximum coming in this over. Ahmad, back of the hand. It's not easy to execute it on the right length. Now this is important. He hit one maximum and 4 dots already. So rotation of strike is equally important in this format, as is the boundary hitting. That's where Fakhr should come and have a word with Shehzad. Just like Haider Ali is having a word with Ahmad. What should be the next delivery? A bouncer. Sharp one. That's the end of the over. 4 done. 29 for 1. बड़ी हवा है इससे धूप के बावजूद सर्दी का एहसास रहा फखर जमान के होते हुए मार्कोर को ये अच्छा एहसास रहेगा जब तक ये विकेट पर रहेंगे। आज इनके बैटिंग पार्टनर जल्दी चले गए। ख्वाजा नाफे अच्छा बाउंसर हम्माद भट्ट। इस बार ये शॉट ज्यादा बड़ा नहीं जा सका और वहां आ लिया कैच। तो इस तरह लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ऑफ स्पिनर को लाने का फैसला ये कमाल रहा। अम्माद भट्ट एक बार फिर एक्शन में आ गए। जी हाँ, अम्माद भट्ट का एक अच्छा कैच। फखर जमान का कैच जो है एक कीमती कैच होता है किसी भी ऑपोजिशन के लिए, और मुबस्सर खान के आते ही उन्होंने ऑस्टम के बाहर था ये गेंद, वहां से इसको स्क्वायर लेग बाउंड्री को क्लियर करना चाहा लेकिन उतना टाइम नहीं कर सके। और अम्माद भट्ट एक अच्छे और बेहतरीन फील्डर हैं। ये बड़ा नुकसान है। फखर जमान 13 पर और यूएमटी मार्कोर्स की दूसरी विकेट गिर गई 29 रन के स्कोर पर। ख्वाजा नाफे क्योंकि आज जल्दी पवेलियन वापस गए हैं इसलिए अब्दुल समद जो हैं उनको फिर से उनका बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया गया है। लोअर मिडिल ऑर्डर से वो आ गए वापस नंबर 4 पोजीशन पर। अभी तक
जो शायकीन इनसे चाहते हैं और खुद मिसबाउल हक भी वो मिला नहीं है यहाँ रावलपिंडी पहुंचकर। फैसलाबाद में और बाद ओमान में एक आध मौके पर इन्हें झलक दिखाई थी। स्ट्राइकर्स की पावर होती है। सलमान जी हाँ, बिल्कुल दराज कर दें और बड़ी हिट मारते हैं और बड़े जोरों शोर से अपना काम करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन एक बार फिर अगर हम उसी टॉपिक पे आ जाएं, ये मौका अच्छा है कि जो प्लेयर्स के वेरिएशन है उनके नंबर्स एक नहीं है। अब ये फुल टॉस बनाया और इसको प्लेस कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ, उधर कोई फील्डर नहीं है, ये एक अच्छा शॉट होगा। अपनी रेंज का, अपने लंबे लीवर्स का इस्तेमाल किया और आगे से इस फुल टॉस को लिया उन्होंने। तो ये प्लेयर्स का जब एक नंबर नहीं होता तो मुश्किल होता अपना जहन बनाना भी एज अ बैटर। हम देखते हैं कि ये भी कभी 6वें पे, कभी 7वें पे, अब 2 डाउन आ गए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं। लेकिन मौके इन्हें मिल रहे हैं, टैलेंट इनमें है, कंसिस्टेंसी जो है वो इन्हें मजीद आगे ले जाएगी। दोनों फील्डर्स अभी ऑन साइड में हैं। शुरू में जब आपको आसानी के साथ एक आध बाउंड्री मिल जाए तो कई बार आपका जो खोया हुआ एतमाद है वो वापस आना शुरू हो जाता है। एक अपनायत का एहसास होता है पिच के साथ भी। अब तक पेस के सामने परेशान थे, तकरीबन यॉक करा लिया था खुद को। 1 रन यूएमटी मार्कोर्स के लिए, लेकिन इस ओवर में विकेट भी उड़ाई मुबस्सिर खान ने। 35 पर 2। देखिएगा सर। एहसानुल्लाह आज काफ़ी अरसे के बाद क्रिकेट में वापस आए थे। उन्हें अच्छे 2 ओवर्स किए। वसीम जूनियर इनकी भी वापसी हो रही है। कुछ अरसे से पूरी तरह फिट नहीं थे। देखना ये है कि ये आज कैसे रिदम में नजर आते हैं। अच्छा आगाज, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ और यकीनन रिहैब के बाद वापस आना एट टाइम्स प्लेयर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, दुश्वार होता है। ये देखिए डिसमिसल ऑफ स्टंप के बाहर से फ़खर ने स्ट्रोक को खेला, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद। इस बॉल को किसी और जगह भी खेला जा सकता था, लेकिन शायद फ़खर को एतमाद था कि वो बाउंड्री क्लियर कर लेंगे। मुबस्सिर खान ने कीमती विकेट हासिल की। इस वक्त मार्कोर्स लाजमी प्रेशर में होंगे। समद कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, आए भी और अच्छी लेंथ एडजस्ट की। वसीम जूनियर एक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और किसी भी टीम के लिए एक फुल पैकेज है। अच्छी बॉलिंग कराने में महारत रखते हैं, डेथ बॉलिंग में यॉर्कर्स अच्छे करते हैं, फील्डर बड़े शानदार हैं, थ्रो बड़ी इनकी ज़बरदस्त है और बड़े हिट भी कभी कभार लगा लेते हैं। तो इस फॉर्मेट के अंदर ये बड़े कीमती प्लेयर साबित हो सकते हैं। एक ज़माने में ये इनका होम ग्राउंड था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। वसीम जूनियर का ज़्यादा पीछे हट गए, रूम जो है क्रिएट करने की कोशिश की। शहजाद ज़्यादा सेटल नज़र नहीं आए इस टूर्नामेंट में। उनको मुसलसल मौके मिल रहे हैं, लेकिन अभी इतना मुतासिर इनने किया नहीं है। शहजाद की जितनी भी बैटिंग अभी तक देखी है उसमें वो आंसर नज़र आता है जैसे ये पहले से शॉट सोच के रखते हैं, और जब बॉल वहाँ नहीं मिलती तो ये आउट ऑफ प्लेस नज़र आते हैं। ऐसा लगता है चीज़ें बिखर सी गई हैं। टॉप ऑर्डर की बैटिंग जो है उसमें आप बॉल को रिस्पॉन्ड करना बेहतर होना चाहिए आपका। ये शॉट बड़ा है, ये शॉट बॉल था और गया बाउंड्री के बाहर। ये बड़ा शॉट, 6 रन, और इससे शहजाद को लाजमी वो एतमाद मिलेगा जिसके वो मुंतजर थे। जहां गेंद बहुत ज्यादा शॉर्ट थी, तेज थी, लेकिन शहजाद ने इसकी परवाह नहीं की। अच्छी बॉल स्ट्राइकिंग। ज्यादातर जो बॉलर्स हैं वो गुरेज करते हैं बाउंसर से पावर प्ले में। देखिए
कतई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा अपने लंबे कद की वजह से। बॉलिंग को लेकर भी एक कंसर्न जरूर है कि अगर एक बैटर अच्छी लाइन लेंथ पे स्ट्रगल कर रहा है तो आप गैर जरूरी तब्दीली की तरफ क्यों जाते हैं? लेंथ बॉल पे उन्हें दुश्वारी हो रही है। और ये एक बार फिर इस बार भी गेंद फुल था और डिजर्व करता था कि बाउंड्री तक जाए, लेकिन बदकिस्मती शहजाद की कि फील्डर के हाथ में गया सीधा और वसीम जूनियर बच गए एक बार फिर। यहाँ वसीम जूनियर की ये जो लेंथ है, ये जो आखिरी गेंद उन्होंने की थी, इस पर ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि पुरानी गेंद के साथ नई गेंद पर जो यॉर्कर है स्विंग नहीं होती, ज़्यादा इम्कान जो है चौके का होता है। इस बार अच्छी गेंद थी और उम्दा कैच भी। विकेटों के पीछे अंपायर मशवरा करना चाहते हैं कि गेंद आया पहुंची थी वहां विकेट कीपर के पास। उमर सिद्दीक ने अच्छी विकेट कीपिंग की है। शहजाद पवेलियन की तरफ जा रहे हैं और अंपायर्स ने रेफर किया है थर्ड अंपायर की तरफ। शायद वो अपना बैट तब्दील कराना चाह रहे हैं, इन बैट्स लेकर जो बाहर वाला एक्स्ट्रा मैन है वो तो अब्दुल समद के पास है और शहजाद ने अपने आप को आउट दे दिया है। अंपायर्स इंतजार कर रहे हैं और बैटर अपना फैसला लेकर पवेलियन की तरफ रवां दवां। कैच तो ये बिल्कुल साफ सुथरा कैच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद शहजाद ने देख लिया था क्योंकि बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, चेहरा इनका कीपर की तरफ ही था। जरा सा लेंथ की तरफ आए वसीम जूनियर और वहीं से उनको कामयाबी मिल गई। इससे पहले ज्यादा आगे पीछे बॉलिंग कर रहे थे, बहुत आगे बहुत पीछे, और जल्दी ये फैसला आ जाना चाहिए क्योंकि ये जो एंगल है ये तो वाज़ेह लग रहा है, ये बल्ला हटा है गेंद के रास्ते से, जहां यहाँ यकीनी आउट है। इसलिए पहली फुर्सत में टीवी अंपायर को यहाँ ये बुरी खबर बैट्समैन तक पहुंचाने का करना होगा ऐलान। वही हुआ है। ओह, ये गलत बटन का, कहीं उसको तो नहीं दबा बैठे। आज बटनों ने आंख में छोली खेली है अंपायर के साथ। और यहां पर यकीनी तौर पर अब सही बटन दबा दिया गया है और बैटर को बाहर जाना होगा कुछ लम्हों के लिए, तो वो भी खुद भी हैरान और परेशान हो गए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मार्कोर्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पावर प्ले के अंदर 3 विकेटें गवा बैठे 41 रन के स्कोर पर, और अब उसामा मीर 7वां ओवर कराएंगे। फ्लाइटेड गेंद, अच्छा रास्ता रोका। यहाँ यूएमटी मार्कोर्स के खिलाफ ये बेहतरीन आगाज यहाँ पर बॉलिंग टीम का, जो कि चैंपियन है वनडे टूर्नामेंट की फाइनल में फैसलाबाद में। इन्होंने यही दोनों टीमें आमने सामने आई थी और मार्कोर्स को शिकस्त हो गई थी खिलाफ तवक्को पैंथर्स के हाथों, और आज भी पलड़ा भारी है पैंथर्स का। देखिए, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हमने देखी थी हुसैन तलत और मोहसिन के दरमियान, जो स्कोर को 190 के पार ले गई थी, और उसमें कोई हमने गैर ज़रूरी तेज़ी नहीं देखी। तो पिच बहुत अच्छा है, आउटफील्ड बहुत तेज़ है, लेकिन यहाँ पर
एक बार फिर इशू को वक्त से पहले फोर्स किया गया और उसी के नतीजे में ये विकेट्स गिरे हैं। जहां क्योंकि तीनों बैट्समैन जो हैं हिट लगाने हुए आउट हुए और इफ्तिखार जो हैं ये भी हिट करने गए थे। लेग स्पिनर से ये देखना ये है कि आज इफ्तिखार जो है कितना मुकाबला करते हैं। देखिए अक्रॉस द लाइन गए, शेप भी बिगड़ गई। ये फुल डिलीवरी थी, अगर टांग गेंद की तरफ ले जाते तो ये कवर्स में 4 रन हो सकते थे, स्क्वायर ड्राइव पे हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन ली उसमें बिल्कुल एक स्लॉग का आंसर पाया गया, जो कि एक टॉप ऑर्डर बैटर के शाया निशान नहीं है कि आप इस बॉल को, जो कि बिल्कुल हिटिंग जोन में है, आप इस तरह से खेलें। इस वक्त जो दोनों बल्लेबाज हैं समद और इफ्तिखार, वो हाथ से नहीं रीड कर पा रहे, मुश्किल हो रही है। ये लेग ब्रेक थी लेकिन अंपायर ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, शायद लेग स्टंप के बाहर से आई हो गिरकर। अच्छा ओवर उसामा का, सिर्फ 2 रन वो देते बने 43 पर 3। ये है पावर प्ले के हाइलाइट्स। आगाज में काफ़ी जारहाना अंदाज था दोनों ओपनर्स का जब ये पहली विकेट गिरी। एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को अक्रॉस खेलना चाह रहे थे नाफे और उन्हें इस बात का दुख हुआ होगा, लाजमी अच्छी फॉर्म में थे। उसके बाद ये 2 अच्छे स्ट्रोक्स, एक कट और एक फ्लिक किया जो कि बॉल डिजर्व करता था। फिर ये फखर जमान का शॉट जो सीधा गया मातबट के हाथों में, और उसके बाद शहजाद ने ये छक्का लगाया। और ये वो शॉट जिसका हमने पिछले ओवर में जिक्र किया, जो सामने कहीं भी चौका मारा जा सकता था लेकिन इस ऑप्शन को लिया। अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट बेहतरीन ऑप्शन है वसीम जूनियर के लिए, क्योंकि इनका बॉल ऑफ द पिच भी अंदर आता है, स्पेशली राइट हैंडर्स को, तो ये खासे डेंजरस हो सकते हैं अगर ये कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कराए। पावर प्ले में अभी तक की तीनों विकेटें गिरी हैं। T20s में अगर किसी टीम को इतना नुकसान हो जाए शुरू में, उसका संभलना जो है वो कहा जाता है 70% नामुमकिन, मुश्किल हो जाता है 70%। 3 विकेटें गंवाकर मेहनत करना होगी मार्कोर्स को। पार्टनरशिप्स का लगना ज़रूरी, पार्टनरशिप जो है वो की है, बड़े स्कोर की जो कुंजी है वो एक अच्छी पार्टनरशिप में है। और पॉइंट के फील्डर थोड़ा सा दर्द महसूस किया उन्होंने कमर में इस थ्रो को मारते हुए। ये अरफात मिन्हास हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी एशिया कप इमर्जिंग में ओमान के अंदर। अच्छे बैटर भी हैं और साथ बड़े यूजफुल बॉलर, और फील्ड में भी लाइव वायर हैं। इस बार फ्लिक किया है अब्दुल समद ने और यकीनी तौर पे ये 2 रन होंगे। बड़ा मौका है अब्दुल समद के लिए, अभी बहुत ओवर्स बाकी हैं और एक बड़ी इनिंग की जरूरत भी है आज टीम को, तो ऐसे मौके जो हैं एक प्लेयर के स्ट्रेचर को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और आज अच्छी तब्दीलियां भी की हैं। सकलैन मुश्ताक ने अपने प्लेइंग 11 में रिजवान महमूद की वापसी हुई है, वसीम जूनियर और अरफात मिन्हास अपना पहला मैच खेल रहे हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए मदद रही है, अच्छे क्रिकेटर हैं अरफात। जी हाँ, दोनों अच्छे क्रिकेटर्स हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, रिजवान महमूद हों या अरफात मिन्हास हों, और उसके साथ वसीम जूनियर तो हम सबको पता है खासे तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, बहुत सारी वाइट बॉल क्रिकेट इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेली है। और इस वक्त मिसबाह उल हक जो कि मेंटोर हैं UMT मार्खोर्स के, थोड़ा फिक्रमंद ज़रूर होंगे। और ये अच्छी फील्डिंग, अभी हमने रिजवान महमूद की फील्डिंग की बात की थी और उन्होंने कर दिखाया इस मौके पे एक अच्छा स्टॉप।
आखिर में गेंद उनके हाथ सुलगती है आगे गई थी, लेकिन अच्छी कोशिश। ये भी टीम में पहले आए और फिर ज़्यादा खेले बगैर बाहर हुए, आई फिर इनकी वापसी हुई है। स्विंग होकर गई गेंद, मुश्किल, आखिर में अपना बल्ला सीधा किया इफ्तिखार अहमद ने। अच्छा स्पेल वसीम जूनियर का। हाँ, इफ्तिखार कुछ जल्दी में लग रहे हैं और ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि ये पूरा खेलें, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक दो बड़े ओवर्स ले सकते हैं और इनिंग्स को बिल्कुल देखते देखते तब्दील कर सकते हैं। इस चीज़ की महारत रखते हैं ये, और कप्तान है तो इन पे बड़ी दोहरी जिम्मेदारी है इस वक्त। ज़्यादातर मैचेस हाई स्कोरिंग रहे हैं, ये जो डबल हेडर्स में जो दूसरा मैच होता है, लेकिन अभी तक यहाँ इसके आसार कम है। इस मुकाबले में 8 ओवर्स के बाद 47 है स्कोर। In 8, a bit of a bother for UMT Markhors, but they're such a settled sides that nothing bothers them. Shah Faisal, good afternoon to you. Good afternoon, Ali. And you're right in saying UMT Markhors 48 for 3. Looking to build a partnership. Nothing in terms of partnerships. 17, 29, 41, fall of wickets. This is a crucial phase now. Very good crowd in on this Friday late afternoon, early evening. Probably the best crowd of the tournament so far. Yeah, the crowd has been entertained by some quality cricket. Only if Fakhr had played a little more, it would have been a double entertainment. The first game going to the wire till the last ball, and that's what we all want to see. The last ball finishes. Time to return home for some after a long day, flying towards their destinations. This is up and over. What a sensational strike and an even better fielding effort. Wow, this is a T20 cricket at its best. Rizwan Mahmood, you little beauty. A good cricket all round. Balance was the key for Iftikhar Ahmed. Still placed it beautifully. Oh, look what they've done. Look what they've done. The captain has ran himself out. Against a run of play, he was looking so good. And look what has happened. No call whatsoever from Samad. And Iftikhar was almost there on the other end. Well, we'll have to see who's dismissed, because Iftikhar, who has been run out twice already in this tournament, this is only 2 dismissals, and I think they've referred it to the umpire. If Iftikhar had crossed, wow, this is disaster for UMT Markhors. Both are refusing to go out. This is staying there. Iftikhar Ahmed and Abdul Samad, such a huge confusion. It was Iftikhar's call. Abdul Samad was not interested at all. To see, first of all, it was a massive misunderstanding. That is probably not the issue here. And look at the umpire. He is trying to stop both the batters.
This will give us a better idea. Iftikhar, tip and run. He kept running. Did they cross before the stumps were broken? I think Samad was the one who was back on time. That look from Iftikhar, have a look at that. Oh, this is drama, drama, drama. It doesn't get any funnier than this. This is what happened on the other end. Samad was on time. Iftikhar wasn't. So he's the one who will have to walk back. Who started walking already. He knew already probably. But just making sure. How often do you see that in cricket? Both the batters looking to get in at the same end. The result is a disastrous one for UMT Markhors. Skipper Iftikhar will walk back dejectedly. Gone for 2. UMT Markhors 50 for 4. Right, Mohammad Nawaz has the opportunity now. 11 overs to go. 3,047 runs, 8 50s with a strike rate of 125 and highest of 72. It's a bit of a comeback for him at domestic circuit for Mohammad Nawaz. So this may turn out to be a good opportunity. Huge opportunity for Samad as well, who's had a very quiet tournament after the big build-up earlier in the season. UMT Markhors have got a very long batting order, and this is the dismissal. Iftikhar called, Samad went and then came back. I don't think there was a run. It went straight to the fielder. And I think justice was served in the end. Yeah, the only concern was the call from Samad. He did call for it, did take a couple of steps. No wonder the captain is furious in the dressing room. Because once you take those couple or more steps towards your partner, he's certain that you're coming. And then you say no. It really gets difficult for the striker to have that momentum back and revert from that position. That's exactly why Iftikhar was furious. Has gone. Samad has dispatched it. That's the kind of power he possesses. So far, he's had a quiet time. Today is the best day for him to come good. That's a big one. Went long way out of the boundary. Mubassir is in a bit of a pressure in this over. 8 runs already. Nicely placed and nicely judged. Samad is a very clean striker of the ball. Just the stride and magnificent swing of the bat. That's a huge hit in that direction. Almost 75 meters, I reckon. No more run-outs, please. A bit of a confusion again between Nawaz and Samad. Iftikhar Ahmed, 3 run-outs already. Their 4th game. Kamran Muzaffar, our statistician, tells me that he hasn't been dismissed by a bowler in this tournament. All 3 dismissals have been run out of 4. 10 gone, 59 for 4, and players will take drinks.
Fakhr was the first one. Fakhr was the second, Shahzad, and then Iftikhar, the last man who ran himself out onto. So lots of drama, Shah Faisal, inside 10 overs. Yeah, no partnerships. Fall of wickets. 17, first wicket. Khwaja Nafe looking to go big. Perished in the cause. Big wicket. Fakhr, Mubassir foxing him into that mistake. And then another wicket. This was Shahzad, who was looking good. But I think this was really the moment of the innings so far. Utter confusion. Neither of them wanted to leave. In the end, Iftikhar did. And wicket apiece for Ahmad, Mubassir and Wasim Jr. Good to see him back in action as well. Sama into his third over, just 4 runs. He's put the brakes on the scoring. He's having a good run in this game. 5 runs given in his 2.1 overs that he's bowled. Well, 7 runs per over will get them to 127, but they would be eyeing on at least 146. That's 9 runs per over from here on. But we know what Abdul Samad is capable of. With Sarwar Afridi still to come, Nawaz with him. They've got some powerhouses in the camp. Samad is off again. He's back again. Back in time on that occasion. Yeah, that 146 is a bare minimum. Sajid Khan is on the field. Replacement. Oh, it took him a long time to turn Samad. That was sloppy piece of running. He came back at a wider angle. Well, that's through. Don't bother chasing those. The outfield will do the rest. Nicely timed and placed. Osama not happy, but threading the needle was Nawaz. He's furious. I doubt there was much the fielders could do. It was hit right between the two fielders. Maybe not happy with where they were standing. Right, it was right between the two fielders. There was nothing they could do at that point. Played it very smartly, soft hands, played it late, found the gap. It's a big shout. The finger's gone up. Sajid Afridi has called for the demise of Nawaz. Missed out on that sweep. That ball was turning a little bit. This is another huge wicket. The wicket keeps tumbling. Yeah, that's the risk involved when you place a sweep shot to the ball which is pitching within the stumps. It did turn though. It had a while to travel too. But umpire Sajid gave in the favor of Osama Mir. Nawaz gone for 5. It's 64 for 5. Sarwar Afridi, fearsome ball striker. Strike rate of 137, the highest just 44. Generally has fewer balls than what he has today. He will have to take his time. We need a partnership. It's very, very strange innings. If you look at the partnerships, Ali, 17 first wicket, 29, 41, 50, 64, fall of wickets. Oh, the finger's gone up again. A first ball duck for Sarwar Afridi, and it's that man Osama Mir once again. And the rot continues for UMT Markhors. Oh, superb piece of bowling from the leg spinner Osama Mir. He's kept the pressure on, given nothing away to the batters. Another one
bites the dust. This time it's Sarwar Afridi pitched in line. The length. A very good catch again by Umar Siddiq is improved as a wicketkeeper. Thick outside edge, Sarwar Afridi checking out before he could check in. 64 for 6. Osama Mir on a hat-trick. He's got the fellow leg spinner Saad Masood taking strike, surprisingly batting at number 8. He's very capable. We've already seen in this tournament. Not overly attacking Osama Mir, just the slip. But what a good catch that was from Umar Siddiq against Osama Mir. A ripping leg break, but now on a hat-trick. Landed it in a very good area. 11 gone. What a successful over this has been for Osama Mir. 64 for 6. Lovely crowd, great evening and amazing piece of cricket. Great combination here in Rawalpindi. As we see change in bowling, it will be Arafat Minhas for the first time in this game. Just keeps on getting tougher and tougher for UMT Markhors. Well, Samad is still there. Probably realizing he needs to take matters into his own hand. 2 wickets. This is Nawaz playing the sweep. Was very disappointed, but this is a terrific catch. Umar Siddiq standing up. There was a huge deflection, and he got his gloves in the right position. Got up at the right time as well. Superb piece of wicket keeping, but this is Osama Mir turning up the heat. His best performance of the tournament so far. Looking for 2, and we'll come back. Hold on, guys. Overexcitement from the 2 Panthers. They're excited because they've got the table toppers under a bit of a pressure. Oops. Saad Masood, we heard, can bat a bit. So here's an opportunity for him to do it. It looks like that somebody who's got a decent technique, the way he handled that hat-trick delivery. One can tell. Well, Ali, you arrived late into the tournament. He was the player of the match in the first game. Both his bat and ball contributions, so he's pretty handy. He's a very promising cricketer. Show it today once again. Nice, neat roll of the wrist. Yeah, that's why I always say, if you get the opportunity, which Masood has at the moment, must cash on it. Big wind up from Samad. Thick inside half of the bat, slight fumble, no damage done. 12 gone. UMT Markhors struggling. 69 for 6.
beautiful evening. The lights are on here at the Pindi Cricket Stadium. Very decent crowd. The families are here. So far, the contest has been dominated by Lake City Panthers. Last recognized pair. Just a few clouds in the sky. Crucial partnership between Samad and Saad Masood. Change in the com box. Marina has settled into her seat and she will be joined by Tariq Said. 70 पे 6 UMT Markhors थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं और अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया है लेक सिटी पैंथर्स ने रिवर्स अटेम्प्ट की थी साद ने और एक और रन आउट का चांस हो सकता है उमर सिद्दीक बहुत क्विक थे कलेक्ट करने में भी और डायरेक्ट हिट कर दी वो मुतमईन है कि उन्होंने एक और शिकार अपने नाम कर लिया है जी हाँ और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ये शिकार में शामिल रहे हूँ उमर सिद्दीक आज विकेटों के पीछे इनका दिन लगता है यहाँ ये पीछे रह जाएंगे वाज़े तौर पर और अब्दुल समद आज 2 रन आउट्स में शामिल रहे इनको अपनी बैटिंग के जो दीगर पहलू हैं उसके अलावा ये रनिंग पर भी काम करने की तवज्जो है हम को बढ़ाना होगा अपने साथी क्रिकेटर के साथ क्योंकि ये नागुज़ीर लगता है जब ये आते हैं क्रीज पर कंफ्यूजन का शिकार हुए 24 रन उन्होंने बनाए 22 गेंदों में 70%। UMT मार्कोर्स के टॉप ऑर्डर ने ज़्यादा बेनकाब होने नहीं दिया इस चैंपियनशिप में अपने लोअर ऑर्डर को लेकिन आज निसार जो हैं वो जल्दी आ गए हैं और इस मौके पर नंबर 8 और 9 क्रीज पर मौजूद हैं ज़्यादा जिम्मेदारी साद मसूद पर होगी लेग स्पिन बॉलिंग जो है ये दर्देसार बनी है इनकी सही मानों में उसामा मीर थे जिन्होंने परेशानियां पैदा की और अभी तक कर रहे हैं इस मर्तबा भी थोड़ी सी हेजिटेशन थी ये देखिए रिवर्स ट्राई की थी और कॉल सम्मत की थी थोड़ा सा बेहतर जज करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल ही करीब गया था उमर सिद्दीक के काफ़ी एथलेटिक है उमर सिद्दीक ये अच्छा रन बिल्कुल नहीं था जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा यहीं पे बटा उसामा मीर आज इनकी बॉलिंग की तारीफ होगी क्योंकि शादाब खान के साथ जब ये खेलते हैं एक ही टीम में तो कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे ये उनके साए में खेल रहे हूँ आज वो टीम में नहीं है तो ये खुलकर सामने आ रहे हैं गेंद टर्न गए बहुमुश्किल गेंद गई वहां पर एक रन मिला मुबस्सिर फील्डर जिनके ऊपर से गेंद गई खुश नसीबी का रन मिला निसार को 13 के बाद 74 पर 7 बैरर डाउन प्रॉपर्टीज एक अच्छा इनिशिएटिव है ग्लोबल जा रहे हैं
बैरियर टाउन प्रॉपर्टीज दुबई साउथ में एक वर्ल्ड क्लास गेटेड कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं। यहाँ इस तरह के मनाजिर आपको ज़्यादातर सहराई इलाकों में देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही उम्दा शॉट था, दलेरी के साथ खेला, फास्ट बॉलर को बिल्कुल सामने, साथ में काबिल तारीफ। गुड ऑलराउंड क्रिकेटर है साद, लेग स्पिनर भी अच्छे हैं, फील्डर हमने देखा है कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी नज़र आए और ये आगे गिरा हुआ गेंद था, हल्का सा कदम लिया था लेग साइड से नीचे उतर के ताकि बासानी अपने बाजुओं को खोल सके। ओवर पिच डिलीवरी वसीम की और 4 रन हासिल किए साद ने। अच्छा ड्राइव साथ की जानिब से, यहाँ थर्ड को खेलने चले गए। इस टूर्नामेंट का ये कम तरीन स्कोर हो सकता है यहाँ पर, हालांकि सिर्फ एक ही बार 200 से ज़्यादा रन्स बने हैं पहले खेलते हुए जो किसी टीम ने बनाए हूँ, लेकिन जो है मुनासिब और दिलचस्प मैचेस हुए हैं मुनासिब स्कोर पर। एक 123 रन पैंथर्स ने बनाए थे लायंस के खिलाफ। और लायंस जो है दूसरे नंबर पर है। ये ज्यादातर वो स्कोर आपको नजर आ रहे हैं जो हारने वाली टीमों के हैं, इनमें से लायंस के शुरू के दिनों की स्कोर लाइंस हैं जो आपको बॉटम में दिखाई थी। तो अपना जो दबदबा है यूएमटी मार्कोर्स पर मरीना, वो आज भी बरकरार रखा है। इस पैंथर्स के ड्रेसिंग रूम ने फैसलाबाद से लेकर इधर भी नफसियाती बर्तरी थी इनको, वहाँ इन्होंने फाइनल जीता था इनके खिलाफ। बिल्कुल, और इसमें कहना पड़ेगा कि यूएमटी मार्कोर खुद जिम्मेदार है। अच्छा क्राउड आया है अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखने, लेकिन यूएमटी मार्कोर को ज़्यादा आज बैटिंग में अभी तक एक शो पुट ऑन नहीं कर पाए। कुछ गलत शॉट सिलेक्शंस, पुअर रनिंग बिटवीन द विकेट, ये रीजंस रही हैं इस टोटल की जो अभी नज़र आ रहा है हमें। विप किया, दूसरे रन को भी आना चाहिए। पहले मारना यार। साद ने इस बुलावे का जवाब दिया। आखिर में थोड़ा आसान लिया, शायद तवक्को नहीं कर रहे थे निसार कि उनके एंड पर थ्रो आएगी। बेहतर कम्युनिकेशन नजर आई निसार और साद के दरमियान। निसार पहले एक बड़ी हिट लगाने गए थे, लेकिन इस मर्तबा अच्छे बल्ले से खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके निकाला। बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि आप तेज़ हों बिटवीन विकेट्स, रन को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लाउड कॉल करना। अगर आप देख रहे हैं कि आपका पार्टनर आ रहा है तो बार बार कॉल करें। इसे चलता किया, अच्छा शॉट खेला, फिर अराफात आए। इस बार उनके बाएं जानिब से 2 रन हुए, पहले दाएं जानिब से 9 रन का ये ओवर रहा यूएमटी मार्कोर्स के लिए, 83 पर 9। धूप अब बिल्कुल ख़त्म हो चली है, तमाशाइयों की तादाद बढ़ी है। आज जुम्मा की नमाज के बाद से अच्छी खासी रौनक लगी हुई है। हमारे बाएं तरफ स्टैंड्स हैं उनमें, और अब ये उम्दा हिट बिल्कुल सीधी
तीर की तरह साथ में ये वार किया। क्या ये 4 हैं, ये 6 हैं? करने नहीं जा, खुद ही मिल जाएगा। अरफात मिनहास का उनको खुश आमदीद किया साद ने। लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे ऑलराउंडर हैं अरफात मिनहास। इस मरतबा आगे गेंद किया था, थोड़ी सी एयर जरूर दी थी और ये बाउंड्री के अंदर पिच हुआ, इसलिए 4 रन हासिल होंगे। अच्छी इंटेंट और अच्छा एक्सिक्यूशन साद की जानिब से। इन सर्फेसेस पे देखने को मिल रहा है कि अब स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं कि परचेज मिल रहा है, इफेक्टिव नज़र आ रहे हैं। सुबह के मैच में भी मेहरान मुमताज़ को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था, बराफात को। ये वाला फेंकी जा। लावली, ये वाला अब फेंकी तक की जा, इनिंग्स में ये हैरान कुन बात है थोड़ा सीधा नहीं, बस थोड़ा सा सिर्फ सीधा नहीं, सम्मा थोड़ा सा सीधा जो नहीं। है जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही है वो सिर्फ 17 रन की रही है। ओपनर्स के दरमियान ये रन्स बने थे फखर और नाफे के। ठीक है, ये वाला फेंकी जा और ना। जो पिछला मैच था ये 3 रन से इन स्टैलियंस के खिलाफ जीता था कल, लेकिन हनी बाजू खोल के। वो भी कोई इतनी इनकी म्यारी कारकर्दगी नहीं थी। स्टैलियंस का खेल खराब रहा था सम्मा, क्योंकि कहा जाता है हम मेरी तरफ मारी। कि आपकी बाज कामयाब बैक कहा जाता है आपकी जो बाज कामयाबियां हैं वो बचा के, दूसरों बहुत की बचा के, नाकामियों अरफात, की बहुत वजह बचा से के। होती हैं। तो वही इनकी जो कल की कामयाबी थी वो सियालकोट की स्टैलियंस की दरअसल नाकामियों की वजह से सामने आई। कैचेट, कैचेट, अंदर आ, स्वीप क्या एरियल है लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद। घूमेगा, घूमेगा, हडी। और ये 2 रन दस्तयाब ज़रूर थे लेकिन निसार बिल्कुल इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए, ना ही साद। देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप, कैचेट, अंदर आ, कानी। इसको फेच किया था और घूम गया था गेंद, जिसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। दानिश नॉर्मली डिसेंट फील्डर हैं और ये माना जाता है कि स्वीप शॉट पे गेंद घूमता है। आय! 15 ओवरों के अख्ताम पे 90 पे 7 यूएमटी मार्कोर्स। ये मैनहट्टन यूएमटी मार्कोर्स का पहला ओवर आप देख सकते हैं, वो एक सबसे ऊंची लाइन खिंची हुई, उसके बाद दीगरे विकेटें गिरती गई और रन रेट भी नीचे आता रहा है। लेक सिटी पैंथर्स ने मौका नहीं दिया सर उठाने को यूएमटी मार्कोर्स को, जिसमें वो खुद भी जिम्मेदार हैं। स्पिनर्स ने आज अच्छा खासा किरदार अदा किया। लेग स्पिनर रमीज और साथ साथ उसामा वो भी काम में आए हैं। पहले फिंगर स्पिनर्स विकेटें ले रहे थे, तो यहाँ ये जो ये टूर्नामेंट आगे जा रहा है ये सिर्फ पेस का ही काम नहीं होगा। स्पिनर्स जो हैं दानिश अजीज जो कि बाएं हाथ से 33 विकेटें ले चुके हैं, ये रहेंगे खेल में। बहुत टाइट पकड़ा सही है, तरफ बहुत बल्ले टाइट पर नहीं पकड़ा है आई बल्ला जरा। निसार के। तो यहाँ क्या कोशिश होनी चाहिए कि ढीला नहीं पूरे फेंकेगा, 20 ढीला ओवर नहीं तक फेंकेगा बैटिंग इसको। करें, 1-2 ओवर और आगे ले जाकर फिर हिट करने की कोशिश करें। बहुत पीछे गेंद किया था लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद है। साद और निसार दोनों में सलाहियत मौजूद है कि वो ओवर में 1 या 2 बाउंड्रीज ले सकते हैं, लेकिन जो हमें पहले बैटिंग में नजर आया ओवर अटैक, ओवर ड्यू किया, वो नहीं करना। लेकिन अब ओवर्स कम है, इनको थोड़ा सा एक्सीलरेट करना पड़ेगा। और ये हिट हवा में थी और वहां पर मुबस्सिर यार के हाथ नहीं लगी। हडी वही फेंकता रहना यार, बिना वजन में
निसार, जैसे अभी बात हो रही थी कि इनके पास पूरी सलाहियत मौजूद है कि ये बासानी बाउंड्री हासिल कर सकते हैं। इस बार अच्छा पिक किया था दानिश को, वेट कर रहे थे इस लेंथ के लिए। उम्मीद करते हैं कि मुबस्सर यहाँ पे ठीक होंगे, लेकिन 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए। बहुत पीछे गेंद कर दिया था, अच्छी बेस बना के तैयार खड़े थे निसार, और अच्छी एफर्ट मुबस्सर की जानिब से, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस था। जहाँ ये इसीलिए ये पहले जो बाउंड्री फेंस हुआ करती थी वो रूल ख़त्म किया गया था, उसी वजह से कि खिलाड़ी जख्मी हो जाया करते थे। यहाँ कुर्सियाँ जो हैं, ये जिस तरह के शॉट्स लगते हैं ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बाउंड्री और स्कर्टिंग के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे फील्डर्स जो है वो एक कुशन एरिया होता है उनका, जब वो बाउंड्री प्रोटेक्ट करने जाते हैं। डाइव्स अक्सर देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं कि कुर्सियाँ या कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए। क्या हिकमत अमली होगी दानिश की, क्योंकि निसार तैयार खड़े। एक बार फिर उठा दिया बॉटम हैंड, और नतीजा वही जो पहली गेंद पे था। बैक टू बैक मैक्सिमम्स निसार की जानिब से। सौ रन भी मार्कोर्स ने मुकम्मल कर लिए। ये ओवर अब तक रास आया है, मुसलसल दूसरा छक्का। इस बार कोई फील्डर जो है पिक्चर में नजर नहीं आया। इस आसानी के साथ खेला महसूस हुए होंगे ये शॉट खेलकर निसार, और यहाँ पर कैच दे गए। एक बार फिर विकेटों के पीछे वहाँ पर सिद्दीक थे, और आज उनका दिन और यादगार हो गया। अच्छा तेज कैच, फासला बहुत कम था बल्ले और ग्लव्स के दरमियान। दानिश ने आखिरकार कामयाबी हासिल की। इस बार थोड़ा सा स्लो था इनटू द सरफेस की, इस वजह से फ़ायदा नहीं उठा सके, और बैकफुट पे कंफर्टेबल नहीं है निसार, अपनी विकेट दे बैठे। उमर सिद्दीक ने बाकी काम किया। 10 गेंदों पे 21 रन बना के निसार वापस। 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे 105 यूएमटी मार्खोर्स। Akif Javed, the new man in. Bit of a partnership, probably the best partnership of the innings. 35 runs came to an end. Nisar was dismissed. Saad Masood is still there. Nisar made 21. Arafat Minhas. And look at those projected scores, 131. They'll be happy with that, looking at the scorecard right now. 145, 153. Well, there's no harm in thinking about getting that far, but to get that far... Well, it's chilly out there, and the hat makes perfect sense, as this one is clobbered to mid-wicket just for 1 run. Young Saad Masood has been very impressive, shown a bit of a character. He looks a cricketer who is instinctively ready to fight, no matter with the ball, with the bat, as this one has been sliced. Once again, poor ball, pushing it faster and fuller, and then talking about the field placing, which has been there the same way for the last 3 or 4 overs. Arafat has missed his line and length
while bowling to the tail enders. Sometimes tossing up, looking for a wicket, and other times just bowling a straighter, full one. कोई बात नहीं बाकी सेव कर Better within the stumps. Yeah, that boundary he conceded, it was wide and quick. Akif used the pace. This was the last wicket. Nisar just getting a top edge. Umar Siddiq once again with a good catch, standing up to the stumps. He's having a very good game with the gloves. In fact, a very good tournament. Well, put the curse on him. He concedes 4 byes. Once again, quicker one. This time darting in. He's getting frustrated because he hasn't picked up a wicket. Have a look at this. And the keeper this time up too early. You have to rise with the ball. And Umar was late on this. And this one is again an appeal. But the umpire, well, his response is no response. It's probably the better ball though. Looping it up in the air away from the hitting arc. Getting some turn and bounce. But this one is quicker and nicely thumped. Excellent work in the field. Saad Masood gets a single to close out over number 17. 116 for 8 UMT Markhors. बहाना कर देते भी आया ठंडा था 2 wickets for Osama, back-to-back wickets, 2 for 14 of his 4. It was a magnificent spell of bowling. Wickets were shared around, and then a couple of big hitters losing their wickets by run out. Something that mentor Misbah Haq would not be very happy with. Ahmad Butt coming back into the attack. He's bowled 2 overs already with 1 wicket. Full toss, just whipped it into the gap. We'll come back for the second. Well, I think Lake City Panthers has been on the luckier side. It's been poor display of batting by the UMT Markhors. Otherwise, the bowling hasn't really been up to the mark. This was another full toss on the offering. Saad looks good talent. Somebody ready to respond to the situations. And he's playing a good hand, 21 of 22. Waited nicely, slashed it away. Danish Aziz into action. You make a good point about Saad. Crisis management. This is what he's doing at the moment, because when he came in, he was on a hat-trick. Osama Mir 64 for 6. He was able to forge a little partnership with Nisar first, and now with Akif. Not happy with his gloves. Probably the umpire is also not happy for so many breaks. Imran Randhawa with a couple of fresh pairs. Well, Saad is very skinny. He shouldn't be sweating that much. It's cold, it's chilly. I don't know whether he pulled off a thread out of the gloves and he had to change, because surely the umpire isn't happy. And this is Asad Shafiq, and his hat tells that he's also feeling the cold, although he's sitting indoors. But yes, gloves is sort of a thing that, if required, it has to be given to the batters. It's Shadab Khan watching from inside. This is big. This is classy and long. 6 written all over this. What a strike. Saad Masood is only a tiny man, but he does possess
the power. Now he'll have the chance to change his gloves, I think. Wow. This is some grip of the bat. Huge hit. Why do you need other gloves? Well, and look at the balance and the base. Very, very strong. That allows him to launch. And look how big it was into the stands. In the cow corner. Probably about 80 meters more. 80 meters or more. For that hit in that direction. Again, length provided by the bowler. Perfect length for the elevation. This is a better ball. But then the fielding effort is poor. And this is not good. Giving runs at the end and getting to a total where fight can be made. It's 126 for 8. Still 2.5 overs remain. 130 actually for 8 after that boundary. Big roar from the crowd. I think the fight is on. The game is on. Saad Masood is not going to complain, although it went straight. Look at the anticipation of Osama. He didn't walk in. He wasn't leaning forward when the ball was delivered, standing way upright. Not good technique, and when the ball did come to him, he was not ready. Oh, you'd feel it was in the slot, but it's in the gap again. This time it's good work in the deep. Action and action, more action from Saad Masood. 16 so far. 5 deliveries been bowled. It's an expensive over and the one dearly needed by the UMT Markhors side. And it's all Saad in this over. A 6 to him, a boundary, 3 twos, and Ahmad, but proving really expensive in the end. And Saad putting up a very impressive show. One for lots of people to see and take in trust. The PSL draft is coming up. Once again hit towards mid-wicket. And will end the over number 18 at 133 for 8. Partnership of 28. Akif's contribution is just 2 balls and 5 runs. Berrytown Properties, Berrytown goes global. Developing a world-class gated community in Dubai South. Something really exciting to look forward to. Very exciting look on the face of Misbah al-Haq and Samiullah Niazi. They have been thoroughly entertained and impressed, I think, by Saad Masood. Before we praise him too much, we just hold back a little after this ball. This is Freebie asking for trouble. Wasim Jr. and Saad Masood is in the kind of form that he's not going to miss out. Once again, he takes the opportunity which was there to be hit. And 4 to fine leg. And the bowling effort from Lake City Panthers is getting from bad to worse. In hunt of the wicket, they are going off target. And making hay is Saad, creating an impression. A very important 40 of 28. Takes his side to 137 with 11 balls to go. Once again flicked towards square leg. Should be an easy 2. Danish isn't very quick across the turf. Neither is the throw very strong. Every ball is yielding runs. And Saad Masood has quickly got on to 42 now. 29 balls. Remember, he came into bat when it was 64 for 6. What can Haider Ali do? This is the kind of length Wasim is known for in this part of the innings. Still putting bat to ball and getting a run. Saad Masood showing full trust
in Akif Javed with 9 deliveries to go. They've already got to a total of some respectability, recovering from the carnage of 7 for 70. It's getting cold in the evening. Everybody's wrapped up. The crowds indoors are better off, but the ones in the stands, they're well wrapped up. And for the Yorker, just a single. Well, it's okay if you have a smiley outlook, but at times you need to be pretty serious about what is going on, and these competitions are to be intensely fought. And, once again, either it's a bad ball and it's a good ball, then the fielders are making mistakes. Another one goes for 4 byes. Lots of mistakes by the Lake City Panthers, and costly ones. At the end of the day, they are allowing the UMT Markhors to get to a total which certainly their bowling has the capability to defend. And at the moment, Saad Masood on 47, and also helped by a few extras. Wonderfully bowled, but then the keeper missing it altogether. At the end of the 13th over, they were 74 for 7. Oh, we may have to have another look at that. Coming back for the second. It's already no ball, not wasting any time. Sajid Afridi and Saad Masood will get a chance to go at a free hit. Yeah, 13 overs, 74 for 7. And now, next 6 overs, they've more than doubled their score with the lower order. This is way over. Well, 74 plus 74 gets them to 148 where they are now. So the first 74 cost them 7 wickets, and the next 74 just costing them 1 wicket. And Wasim Jr. in the end losing the initiative for his side, as this one is hit to mid wicket, and should be the 50 for Saad. I think it's this first 50. Yes, it is 50 of 33 deliveries. A wonderful effort under pressure, and he has come to the rescue of UMT Markhors, who and his teammates stand up and applaud, and he fully deserves that. 19 bowled, it's 149 for 8. Last over, Saad Masood. What a wonderful half century this has been from him. Full toss, whips it away, and all the way. Just a wristy flick, and it flew over the fence. What a talent this young boy is. Well, as it gets more and more cold for the dugout, I think the bowlers are also feeling cold, because they're faltering in line and length. And Saad, what a wonderful stroke that is. Great use of the wrist, good balance while executing the stroke. And boy, does he generate some power through these shots. How impressive is his balance, and his base is so strong. He's not very heavy built, but very, very strong. Once again, strong base, flays it away. Fetch that, Ahmad Butt. Saad Masood is on fire here. Absolutely. The pressure coming to the experienced guys, and the young man is taking them to the cleaners. 60 of 35, he moves on to 159 for UMT Markhors, who certainly would feel now they have a chance in this game. And
Now we can see life coming back to this dugout. This is the kind of performance where you stand up and take a note. Who is this boy? This boy is Saad Masood. Look at that base once again. Not an inch of movement in his lower part. Just the hands going through the ball. Slower one. This has gone miles up. Has it gone far enough? Not quite. And dropped. This is the kind of effort it has been from the Panthers in the last half an hour or so. All smiles for UMT Markhors. Well, it's Rizwan Mahmood. He's known for good fielding, and on this occasion the pressure has got to him. And see how happy the coaches are in the UMT Markhors dugout. This was a slower one, hit the bottom of the bat. Plenty of time for the fielder to come in, but he had no position. Just have a look at his feet. Look at that piece of paper fly across as the ball was approaching Saad Masood. Well, Rizwan Mahmood from Hyderabad probably hasn't experience playing in such cold conditions. Normally a very good fielder. Incredible figure. Saad Masood's this inning is the highest score at number 8 or lower in any T20 in Pakistan. Incredible. Pakistan are such good batting conditions that number 8 hardly gets a chance, but this boy has come in and under pressure he's delivered the goods, and he's looked exceptional responding to the pressure and the situation that his team was in. It's a fantastic knock, and he's definitely the material to bat a bit higher in the order. Definitely material to keep an eye on. Did play in the Pakistan Junior League. Kabaddi Sharks. Good delivery from Ahmad Butt. And the right thing, Saad Masood stays in because he's the best man at the moment to take strike of the last ball. Also had a bit of a taste of PSL, playing for Peshawar Zalmi against Lahore Qalandars. I'm pretty sure a lot of people will be keeping an eye on Saad Masood. Batting is not just his only prowess. He's a very good leggy and a very good fielder too. This is clever from Ahmad, the experienced man. One for 41, Ahmad, whose figures were looking so impressive not so long ago. Last ball of the innings. Wide, way wide, and given. Ahmad Butt trying to stay one step ahead of Saad Masood, who was walking right across his stumps. But even then, the umpire thought that delivery was wide enough. Who would have thought at the end of 13 overs, 74 for 7, they would propel to 162 for 8. This partnership is 57 runs, and Akif has played 3 balls and 6 runs. That's his only contribution. Another beautifully played stroke, fast hands, but the field was well set, well executed. Wide Yorker from Ahmad Butt, and the innings closes out at 163 for 8. What a knock, what a memorable knock from young Saad Masood. And I think, and I'm pretty sure his team will rise up to him, because this has been a truly innings-saving knock from the youngster. Yes, just have a look at this. 73 of the last 5 overs for 1 wicket. And this is what will bring pressure on this group, the Lake City Panthers. I think they took it really easy, and they underestimated the young talent who played brilliant knock. And he brought his team to a target which definitely has been defended in the past in this very tournament. So UMT Markhors, with a strong bowling lineup, will start to feel very confident after this exceptional batting display from Saad, who has been exceptional with the ball in this tournament, and now he's shown his other side, and that is with the bat in hand. As Haider Ali leads his team back into the dressing room, and he doesn't look happy at all. So it's 164, the target for the Lake City Panthers to get. UMT Markhors earlier
Nobody created an impression. Fakhar gone for 13. Nafe just got 3. Shehzad 17. Abdul Samad run out, and he was involved in another run out with Iftikhar, who just scored 2 runs. And then Nawaz came in, and wickets kept falling. He also went for 5. And Sarwar came in, and a golden duck for him. And then came in Saad, and the show started. 63 of 39, and he was the man of the moment. Nisar also looked good for his 21 of 10. That was a quick knock. And Akif joined forces, but just to watch from the best seat in the house. Well, the bowling card that was looking so impressive in the beginning. Look at those figures now. Osama Mir standing out with 2 for 14 of his 4s, but everyone else travelled. Danish Aziz 1 over for 15, Umar 1 over for 15, and Ahmad Butt, the experienced man, going for 43 of his 4 overs. Just the 9 extras, but carnage towards the end. Well, it's time to join Ali Yunus, who's downstairs. Let's see who's he got. Yeah, from 67 for 4 to 164 is what UMT Markhors made. I've got the showstopper alongside me, Saad Masood. Brilliant inning. Saad, बहुत मुबारक हो. कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑलमाइटी और काफ़ी अच्छी फीलिंग है क्योंकि मैंने शुरू से पैड किए हुए थे. आज मैं थोड़ा बैटिंग कार्ड में चेंज था तो बस कॉन्फिडेंट था, वेट कर रहा था अपनी अपॉर्चुनिटी का. बॉलिंग टैलेंट तो आपका हमने देखा. आज आपको अच्छा मौका भी मिल गया, काफ़ी ओवर्स मिल गए अपना बैटिंग स्किल दिखाने के लिए. जी, मैं शुरू से यही प्लान कर रहा था. जब मैंने पहली इनिंग लगी मैंने द मैच की तो उसके बाद मैं यही प्लान कर रहा था कि जिस दिन भी मुझे ज़्यादा ओवर मिले तो इंशाल्लाह ग्रैब दैट. कंडीशंस का थोड़ा बताइए. जब आप बैटिंग करने गए, 7 विकेट्स गिर रही थी, तो क्या प्लान लेके गए थे? जब स्टार्ट में मैं गया तब तो काफ़ी बल्ले पे आ ही नहीं रहा था बॉल. जैसे जैसे थोड़ा लाइट ज़्यादा हुई, लाइट कम हुई नेचुरल, तो बल्ले पे आने लग गया था बॉल. लेकिन ग्रिप फिर भी हो रहा है स्पिनर का. 164, आपको क्या लगता है कैसा टारगेट है इस पिच पे? आई थिंक बहुत अच्छा टोटल है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको डिफेंड करें. चलिए, ऑल द बेस्ट. बहुत ही अच्छा खेले आप, बहुत मजा आया देख के. थैंक यू. Right, that is all we have from downstairs. Back to you guys in the commentary box. Thank you very much, Ali Yunus. Well, what an action-packed innings it was. It was an innings of 2 halves. Started off with Fakhar's usual aggressive intent, although it didn't last for very long. Wickets started to fall. Khwaja Nafe was the first man to go. And then Fakhar and Shehzad just stayed for a brief while, but then Lake City Panthers made a stunning comeback into the innings. First it was Fakhar, and Shehzad struck a few meaty blows. Couldn't stay there for long. Wasim Jr. announcing his arrival. Then the catastrophe in the middle, started by this run out of Iftikhar. Samad flourished for a brief moment. Nawaz came and went. And Samad, Sarwar Afridi rather, went first ball duck. Samad faced the same fate as his skipper did just a while ago. Brilliant Umar Siddiq striking a direct hit to get rid of him. Then entered Saad Masood, the little champion. First forged a partnership with Nisar, who was belligerent himself. Nasty moment where Mubassir sustained a little injury. Hope it's not too severe. Nisar's innings did come to an end via Arafat Minhas, Danish Aziz rather, and Umar Siddiq combination. Akif was a mere spectator after this boundary because it was Saad Masood's show. Look at those balls flying in all direction. Some loose stuff in between. But he kept his head. He kept going. He got to his maiden 50. He got to the highest score by any number 8 in Pakistan in T20 cricket. A new star looks like to be on the horizon. Everyone will take a little breather now. When we return, Lake City Panthers will go in pursuit of 164. Join us then. Down the track, takes the charge straight away for Zaman. What have you done? It's straight to the fielder.
on the track, smashes it through covers. ये शॉट ज्यादा बड़ा नहीं जा सका और वहां आलिया कैच. Oh, look what they've done. Look what they've done. The captain has run himself out. Samamir once again, and the rot continues. 50 of 33 deliveries, a wonderful effort under pressure.
again, this is match number 10 from Rawalpindi Cricket Stadium. Lake City Panthers taking on UMT Markhors. So the big news is that UMT Markhors have shown a remarkable recovery courtesy to Saad Masood, who stayed not out till the end. 63 runs he scored of just 39 deliveries. Contributions from Samad, Shahzad and Fakhr up the order as they score 163 for 8 in their 20 overs. Right, he was really the star of the inning. 67 for 7 they were, and then came Saad Masood, played such fantastic shots. It's never easy playing with the tail, but he did it with some ease and quality. Shot making has been immaculate. The timing, the placement, it's just been wonderful. So heartening to see a young batter coming to the situation and playing for the team. And the timing of this inning was brilliant. At one point, UMT Markhors was struggling. It has been a struggle, especially in the death overs for Lake City Panthers. Very expensive. Ahmad Butt, 4 overs, 43 runs he gave away. Danish was used for 1 over, 1 for 15. A couple of wickets for Usama Mir. He was the difference in the middle overs, but it was the death overs that mattered, and they did not prove to be right in those death overs, as they conceded 163 for 8 when they had their opponents on 63 for 7. Right, the chase is on from Panthers. The target is 164. Good start will be required, as it has always been in this tournament. A very happy Salman Butt is alongside me. He's usually very happy when he sees a young batter coming to the party, scoring at a time when the team needs it, Salman. Absolutely, and I'm very pleasantly surprised by the kind of game awareness young Saad has shown, and the shot selection and which bowlers to take on, and the temperament that was on display was outstanding, to say the least. And I think it's always good news, and I think there have been a few silver linings definitely so far in this tournament. Talk about Mohsin, talk about Hassan Nawaz, and this young lad. He bowled well in the previous games, won a man of the match, and now he's batted well. And here is Sharjeel Khan, another batter who can be very dangerous for any opposition. 157 games, 3,700 plus runs, averages 25, strike rate is high, 138, and experience, there is no shortage of it. On the other end, it is Mr. Umar Siddiq, 58 games, but he's been in good form in this tournament. He's also looked good, and he's won a game for his side as well. So, but they have a different challenge. Markhors, a tough bowling side. Yeah, you just mentioned about Umar Siddiq. We'll come back to that. 52 wickets for Akif Javed. Economy 8.63, best of 4 for 28 at 24 years of age. Umar Siddiq has got a job to do. He's had a wonderful evening as far as gloves are concerned. He's taken a couple of great catches, a great run out. So he will take that confidence into batting. Akif Javed to bowl the first delivery of the run chase. Oh, on target. Oh, that's hit him. Nasty. The length. Extra bounce. Some confusion. Everything is happening. It's a happening start. Well, it has been a happening game since the last hour. Just the interval in between was subtle. Otherwise, things have been pretty fast. Even the wind today has been faster, and it has made the weather more chillier. And we see people wearing different hats, and also jackets and other stuff has come out, as this ball in this chilly weather, it can sting you. And this is played well off the hip and gets them off the mark, both Lake City Panthers and Umar Siddiq. Talk about weather. It was freezing when I went out for that interview. A nice cup of coffee would help. Sajid Khan, always animated. Love the moustaches. Wonderful moustaches, wonderful attitude, brilliant smile, and the PCB's flag is flying high.
2 slips for Sharjeel, and they're looking to pick up wickets. They know it's important. Wow, wonderfully bowled, bringing the ball back in. And the umpire says, hold on everyone, I have a different idea. Calm down. It was touch high. Mr. Faisal Afridi is a good umpire. But everything is happening for Markhors. They're high on confidence. And this can happen. Jack back in. Yeah, definitely high, very high. Their length looks stunned. Wonder why. 2 slips in for Sharjeel Khan. Salman, once a team has recovered from 63 for 7 to 164, they're naturally high on confidence, and that is showing in the energy at the moment as far as the fielding is concerned. Absolutely. They've come back. And once again, the ball right on target. Lake City Panthers is not a very experienced bowling side, and they rely highly on their power hitters. And now their batters will have to make up for the bowling and the fielding that we saw from them in the last 10-12 overs. So it's the onus has shifted now, and it's up to Sharjeel Khan, Umar Siddique, Mubassir Khan, Haider Ali to come up with the goods if their team has to win this game. It isn't going to be easy. Markhors is an experienced side with variety of bowlers. Oh, whoa. Whoa, ho, ho. That is a beach of a delivery. How did he survive? That's the question. Must be a very lucky evening for Umar Siddique. Yes, right on the money, on target, and the ball moving away very late. And the batter sometimes can be only a spectator. Such deliveries when they take place. Only 1 slip for Umar Siddique. They had couple for Sharjeel. Not convincing at all. Not convincing at all. So Akif making the ball talk in the very first over. It's 2 for none. Yeah, they've thoroughly been entertained by the young Saad Masood. They come in numbers. There's one stand who's completely full, and the other stand there are a few people. As Nisar will bowl his first over, 27 wickets for him. 5 for 5 is best. Amazing. Wayward start. And a chance at non-strikers. Big Sharjeel had to rush to the non-strikers end. This is the one was there to be taken. Rightly so, Umar Siddique calling. Let's have a look at this response from Sharjeel. So it's Nisar now with the new ball in his hand, bowling the second over of the innings, and he has been mighty impressive in this tournament as well. Played a good knock earlier, 21 of 10 he got. Shot wide outside the off stump. Lucky not to be hit. Umar Siddique has got a job to do. He's normally a very cool and a calm customer. But Salman Bhatt, I'm going to bring you back to Saad Masood. He's done something that has not been done in Pakistan before. A batter playing at 8 or below has never scored more than him. 63 he scored at batting at number 8. He broke the record of Iftikhar Ahmed, who scored 60, playing for Pakistan against New Zealand at Lahore. Fahim Ashraf scored 55. Edge, no one there. No one there. I wonder why.
good piece of fielding at deep third too by Akif Javed. So everything is happening. So that's a remarkable achievement, playing at 8 or under. No doubt about that. Wonderful knock when the team really needed it. When there was pressure, there was 7 down for 74 runs. And the way he came in, and from ball 1, he looked absolutely confident. And you hardly or rarely see such that a young lad comes in and responds to the situation like he did. So it's really an asset for the future. Very, very impressive show. Yeah, people have already started talking about him, that he is one to look for the future. I did receive some messages from overseas even, where people are watching this. Nisar has been brilliant. He's been into the wickets. He's taken few. He likes bowling in these conditions. Bang it in short. Not easy for the batters to get him away. That extra bounce, that whip he gets out of the surface. The bandana man. Still no slip. They had 2 for Shajil against Akif. They were third, was quite squarer. There are in fact 2 fielders at third, I would say, because Shajil likes to play in that area. The plan is set for Shajil, a place where he has been recently dismissed quite a number of times. That flick of the hips that he plays usually carries to the fielder a deep square leg, and that is perfectly placed where he's often been caught. So he has to be careful, think about that the man is there and play accordingly. Change of pace and just played with soft hands for an easy one. Is it that difficult, Salman? I know he likes playing that pull shot. Is it that difficult? If you're getting out in the same place again and again, is it difficult to hold on to yourself, that instinctive self? Ali, it should be the way that you said. It shouldn't be something that you cannot control. But these days, some boys, they practice so much of particular strokes that when that ball arrives, the muscle memory takes over, the instinct takes over, and there are no second thoughts. As this one is bowled slow, and once again straight to the fielder, who are definitely right on the money. And it's 2 overs gone. Lake City Panthers are 6 for none. It's a gorgeous evening here in Rawalpindi. Freezing though, with some quality cricket in front of us. Yeah. Even the moon looks like the ball of ice, the kind of weather that it is. And Sharjeel, we were talking about him. I have seen his practice sessions. He hits lots of balls in this area. And when that becomes part of your muscle memory, then in a game, when the ball comes in that position, sometimes there are no second thoughts and you instinctively go after it. And that is why it's so important for a player to keep a balance. Excess of everything has an effect. And that is what has caused Sharjeel's demise on so many occasions. Spot on. Absolutely. Shajil Khan is not happy with something right in front. There is a light on right in front of the eye line of the batter. It's not good. Even it's distracting us from here. Yes, it is causing a huge glare, and I don't know where it has come from, because previously there were no lights on, and this is the first occasion that these lights have been switched on. Has somebody lost something over there and they're searching for that? I don't know.
There's Aleem Dar sitting right under the light. Maybe. So, you mean it's a spotlight? It's all fine. It's gone. It's switched off. We're back to normal. 6 for none in 2. It's a good start for Markhors. Slip is back whenever Akif bowls. Ah, wow. This time he's connected it nice. There was a fielder placed, but it went right away from him for a boundary. Once again, you see the ball on the hips has been hit instinctively, but for surprise is that for Akif, there was no deep square leg. Only the fine leg was placed a bit wider. The square leg is in the circle. So surprisingly, the UMT Markhors missing the trick, and Sharjeel taking full advantage of that delivery. And even now, they haven't placed the extra man. If he had been on the boundary, this could have been a straightforward take. At the moment, the decision is not quite straightforward. He's having a look at it again, but from here, from this look, yes, 6 is signaled by Mr. Afridi. Yeah, they just had one fielder placed right in between the fine leg and the square leg. It's it hard, no timing at all. Well, they're keen to have a slip for Sharjeel, but not a deep square leg where he's gotten out few times. And that's exactly where he plays. Instinctive. Looks good actually when he plays it, but how many times has been successful doing it? He's not going to be, disturbed from this position. Every time you keep bowling there, he'll keep hitting you sweetly. The only chance is to have a fielder there. So they have a wide fine leg, but still the square leg is up in the circle. This was a bit foolish. Not the same length, but he still went for it. So you can notice the instinct, how much it's there. And I'm surprised that the UMT Markhors haven't taken notice of that. Misbah was alongside Sharjeel playing in the Legends League in England, where he was dismissed like this a number of times. It's hard to miss out. It's cold. He's feeling the cold. Iftikhar Ahmed. And again. You keep bowling me there. I'll keep hitting you there. That's the name of the game for Sharjeel Khan. That's the sort of brand he plays. Risky, yes. But whenever it pays off, it looks good. And it is beneficial for the team and himself. But how many times? That's the question. Nice, nice. They need blankets out there. Because towels, they are for some other purpose. They are not a great help in this chilly weather. And this time it's Umar Sadiq flicking one through the gap, through mid-wicket. Beautiful stroke that, another 4. And now some sort of momentum coming the way of Lake City Panthers, courtesy both the openers. That is super shot. It may look easy to you, but the execution was brilliant. It's a difficult shot to execute. Just the use of wrist and the placement from Umar Sadiq. High class skill. And now, eventually, the fielder has gone back. So finally, they have taken notice and acted upon it. He's having a great evening, Umar Sadiq. First with the gloves, now with the bat. That's what they like these days. The modern day batters gave himself room, showed his stumps. End of 3 overs, 17 for none.
Good crowd in. You have to say this. They're nice and comfortable. Enjoying the game. Heaters on, coffee with them. Nice place to see the cricket. He's looking to hit them hard. But Salman has been saying it, it's more about timing on this surface rather than hitting it hard. Earlier we saw Saad Masood played a quality inning. UMT Markhors, such a huge side. They keep on coming. You get one out, there is another one, there's another one. And now at 8 they've got Saad Masood who scored 63. They're a huge side. Misbah luck. He's pulled this one. No timing again. Should be an easy couple. And Sharjil's one of his very favorite areas is off the hip. And if he has a good day, this game would be over by 15 overs. He's such a dynamite with the bat in hand. And it's great to see families turning up, kids turning up. And these sort of jackets is what the players need instead of towels. Because this is a good protective gear these two kids are wearing. Nice. They haven't really opted to go for that shorter delivery to Sharjil, especially with Nisar. He's been adamant on bowling the cutters around the wicket. And this might be the zone that Sharjil needs. And Rizwan, well, he's looking Don't a say bit it. different. Don't say I think it. they're feeling chilly in the nose as well. Don't say it. I knew you were going to say something. Oh wow, what a shot. 4 written all over it. Beautiful placement, timing, everything cool about it. Beautiful cricket stroke. Stand and deliver. Good balance, and very few times have we seen a stroke that has been played on the up through the square, on the offside. And more or less it's been this man who has played that shot. And he's an elegant left-hander, and that's about the praise that I can do. Otherwise it can affect the player. Every time they hit a boundary, the next delivery they look to hit it too hard. But Nisar has been smart, changing the pace, mixing it up. Now, Salman, they've actually heard you, and they've placed 2 fielders again for Nisar. Earlier there was only one. Now there's one at deep square leg and deep mid-wicket also. So maybe that's the plan from here on. Well, let's see. But I really hope that Sharjil has taken notice of that. It's a no ball. This is not what the UMT Markhors require. They do not have a lot of runs to play with. Enough to fight, but can't be that loose. And Nisar has been brilliant throughout the tournament. It's just one of those days where the execution seems a bit lazy. This one was a slow one on the gloves. Now, is he lucky enough to be facing the free hit? Will he break the shackles? Will this be the moment for Sharjil when he can't lose? It's over and above the fielders. Not very intended, not how he would have wanted it, but still will take couple of runs. End of 4 overs, it's 28 for none.
अच्छा आगाज यहाँ पर मिल गया है और आज तमाशाइयों ने भी अच्छी हाजिरी को यकीनी बनाया है। पहला मैच इंतहाई दिलचस्प साबित हुआ, उसका फैसला आखिरी गेंद पर हुआ और यहाँ भी सूरत हाल ये बन सकती है दिलचस्प, क्योंकि बॉलिंग के वसाइल हैं इफ्तिखार अहमद के पास। शर्जील, उमर सिद्दीक दोनों लेफ्ट हैंडर्स को देखते हुए वो खुद अब आ गए। 2-2 ओवर कराए उन्होंने पेसर से। निसार आज जल्दी विकेट नहीं ले सके। नई गेंद पर मरीना इकबाल इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में। इस मौके पर लेक सिटी पैंथर्स का पलड़ा जो है वो वाज़ेह तौर पर भारी है। बिल्कुल, उमर सिद्दीक एक शानदार फॉर्म में। शर्जील स्टार्ट ज़रूर स्लो किया, लेकिन जानते हैं कि वो अगर सेटल हो गए तो वो वन साइडेड गेम बना देंगे। दोनों से की ये एबिलिटी है कि वो बड़ी हिट्स मार सकते हैं किसी भी मौके पे। इफ्तिखार अहमद थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं अभी तक जिन मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की, और उसका भरपूर फ़ायदा भी ऑपोजिशन ने उठाया है। इतनी आसानी के साथ ये हिट लगाने नहीं देते, मुश्किल बॉलर हैं बाएं हाथ के खिलाड़ियों के लिए। सुई नॉर्दर्न गैस की टीम में कल्चर था, वहाँ हमेशा ऑफ स्पिनर्स हुआ करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में। इफ्तिखार उन्हीं में से एक थे उस दौर में। मोहम्मद हफीज़, इफ्तिखार, खुरम शहजाद, जो कि लेफ्ट हैंडर्स की शामत आ जाती थी इनके सामने। शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग अब्दुल समाद था आड़े। काफ़ी आगे गिरा हुआ गेंद था। शर्जील अच्छा खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी, मिड विकेट तो इनकी स्ट्रेंथ है। रन्स आएंगे ऑफ द पैड। अंपायर मुंतजिर थे कि पहले बल्लेबाज पहुंच जाएं, उसके बाद वो अपना इशारा करें। फैसल अफरीदी साइड स्क्रीन की जो पोजीशन है वो उन्होंने तब्दील करने को कहा है, बाहर से बुलाया गया है। दरअसल मदद की ज़रूरत थी यहाँ शर्जील खान को, इसलिए पहुँचे हैं वहाँ पर उन्हें तिब्बी मदद देने के लिए। फिजियो आज छठा दिन है, हम रावलपिंडी में हैं और शायकीन जो हैं ये सख्त सर्दी भी इनका जोश जो है वो कम नहीं कर पाई। यही इनकी खूबी है कि हमेशा रौनक बढ़ाते हैं आकर। T20 की रौनक जो है वो जाहिर है वो इन्हीं के दम से। बिल्कुल, और स्टार्स भी इन्हीं की वजह से हैं, ग्राउंड्स में बनते हैं, उभरते हैं। बूम बना के ऑफ साइड पे खेलना चाह रहे थे उमर सिद्दीक। अच्छा फॉलो किया, थोड़ा तेज किया हवा में गेंद, डॉट पे इख्तिताम किया इस ओवर का। 5 ओवरों के बाद 30 बगैर किसी नुकसान के। आने वालों में हैदर अच्छी फॉर्म में हैं, रिजवान महमूद आज वापस आए, दानिश भी अच्छी बैटिंग फॉर्म में लगे। मुबस्सिर, अमाद बट, आज वसीम जूनियर और अरफात मिनहास के आने से और बैटिंग इनकी बढ़ी है। उसामा मीर ये भी बिल्कुल रन्स बनाने की अहलियत रखते हैं। 10वें नंबर पर आकर फुल शॉट खेला, लेकिन वहाँ पर मौजूद थे फ़खर जमान, एक ही रन
मैसर आया। ये आखिरी ओवर है और यहाँ ये चाहेंगे कि ये जो रन औसत इस वक्त 6 की है, ये इस ओवर के अख्ताम तक ये 7 तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल निसार को थोड़ा मोहतात होकर बॉलिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा हार्ड लेंथ पे करते हैं, सरफेस पे हिट करते हैं बॉल को। दिल का शॉट मिड ऑफ के फील्डर जो हैं उन्हें संभलने का भी मौका नहीं था। जो ही आगे गिरी, उमर सिद्दीक जो है इस पर पूरी तरह पिल पड़े। दरअसल बहुत ज्यादा आगे गेंद नहीं थी। ये इनकी सिग्नेचर लेंथ है जिसके लिए तैयार खड़े थे उमर सिद्दीक। देखिए लेग स्टंप पे खड़े थे, जानते थे कि प्रॉबेबली फोर्थ स्टंप या ऑफ स्टंप पे गेंद की लाइन होगी और इसीलिए बासानी इसको सीधा सर के ऊपर से खेल पाए। और शॉर्ट गेंद थी और इसका भरपूर जवाब दिया। पहले से ही तैयार थे। एक और खूबसूरत पुल शॉट आसीने अब चढ़ा लिए। यहाँ उमर सिद्दीक ने अपनी फॉर्म को एक बार फिर कैश कराने के मूड में। अच्छी बैटिंग है और इसमें महारत उमर सिद्दीक की है। थोड़ी ओवर करेक्शन की, लाइन में भी लेंथ मजीद पीछे थी, फील्डर 45 पे मौजूद था और बिहाइंड स्क्वायर इसको खिलाड़ियों की मदद से प्लेस करने में कामयाब हुए। ऑफ साइड में एक भी फील्डर बाउंड्री पर नहीं है। क्या जगह बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेग साइड की तरफ ही खेलने को गए। ये आसान बॉलर साबित नहीं हुए निसार हेड लगाने के लिए अब तक। लेकिन अब तीसरा ओवर है, नजरें जम गई हैं उमर की। इनके सामने भी इसे वार करने का फैसला किया। निसार भी जानते थे कि पावर प्ले का आखिरी ओवर है, तो जाहिर है कि शर्जील और उमर दोनों अटैक करना चाहेंगे, कैपिटलाइज करना चाहेंगे ये आखिरी ओवर। अभी भी ऑफ साइड पे बाउंड्री के ऑप्शन मौजूद है उमर के लिए। अच्छी डिलीवरी, इस बार कटर किया, शशदर रह गए उमर सिद्दीक और खासी ओवर स्पिन भी हुई। अच्छी वेरिएशन थी और अच्छी लेंथ से की थी इन्होंने। देखें तैयार खड़े थे, शफल कर गए थे, थोड़ा सा स्क्वायर अप हो गए, बिल्कुल नहीं पिक कर पाए इस लोअर वन को। इनटू द सरफेस भी कराया था जिसकी वजह से हल्का सा ग्रिप हुआ है और मजीद डिले हुआ गेंद आने में उमर सिद्दीक के पास। फिर हवा में खेल गए लेकिन बहुत दूर खेल गए इस बार उमर सिद्दीक। जब जब गेंद इनको शॉट पड़ी है इससे बुरी तरह पेश आए हैं। इस पावर प्ले का इख्तिताम छक्के के साथ हुआ। 45 पर कोई नहीं। शर्जील और उमर सिद्दीक ने आगाज किया लेग सिटी पैंथर्स की बैटिंग का। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती रही बाउंड्रीज की। आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत ही महारत रखते हैं उमर सिद्दीक, अच्छा यूटिलाइज करते हैं, क्लीन हिटिंग टेक्निक के साथ नजर आए। शर्जील दूसरे एंड पे जब उन्हें भी मौका मिला उन्होंने भी भरपूर फायदा उठाया। ये अच्छा कदमों का इस्तेमाल था। गो के बैलेंस आउट हो गया था लेकिन फिर भी कनेक्शन हासिल करने में कामयाब हुए। पावर प्ले का इख्तिताम 6 ओवरों के बाद 45 बगैर किसी नुकसान के ये पावर प्ले। और अभी तक जो मैच की सिचुएशन है उसमें लेग सिटी पैंथर्स हावी हैं। इफ्तिखार कंटिन्यू करेंगे। सिंगल के लिए खेल दिया, 2 रन मुयस्सर नहीं है यहाँ पे। पावर प्ले के बाद 41 पे 3 थे यूएमटी मार्कोर्स। अभी तक कोई विकेट गवाई नहीं है। अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों के माबैन। Come on, boys. ये वाइड रहेगी। इफ्तिखार अहमद जो हैं दरअसल इन्हें क्रैम्प करना चाहते हैं और सिद्दीक, ये बड़ा खतरा है। इनकी जो विकेट है ये इस वक्त शर्जील से भी बड़ी है।
अगर इस टीम को दबाव में लाना है वापस इफ्तिखार अहमद को, तो इनको चलता करना होगा। बिल्कुल ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पावर प्ले में एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, बड़ी शॉट्स भी खेल सकते हैं, और जैसे ही पावर प्ले खुलता है तो इनिंग्स बिल्ड करनी भी आती है। और हमने देखा इसी टूर्नामेंट में शानदार इनिंग्स खेली थी, टिल दी एंड भी जा सकते हैं, लंबा खेल सकते हैं। अच्छे स्पिन हिटर हैं शर्जील खान, लेकिन इस बार गेंद बिल्कुल जमीन पर से होती हुई गई। एक ही रन यहाँ पर मैसर आया। खासी बड़ी तादाद में बॉल बॉयज हैं मुख्तलिफ क्रिकेट क्लब से, इनको लाया जाता है मुख्तलिफ दिनों में। अपने हीरोज को देखते हैं और ये गेंद जो है स्टंप से नीचे चली जाती। थोड़ा तेज गेंद कर रहे हैं, रूम देना नहीं चाह रहे इफ्तिखार, इसलिए यकीनी तौर पे लेग साइड से नीचे ये गेंद जा रहा था। और कीपर की मूवमेंट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉल की क्या डायरेक्शन थी। 50 रन मुकम्मल किए सिंगल के साथ लेक सिटी पैंथर्स ने। अभी तक किसी विकेट का नुकसान नहीं उठाया। शर्जील सेकंड फिडल के तौर पे खेल रहे हैं, उमर सिद्दीक बेहतर स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक और रोल अपनाया। कट किया, बहुत ही शानदार फील्डिंग। समद इस मौके पे एक और ओवर का इख्तिताम हुआ डॉट बॉल पे। 7 ओवरों के इख्तिताम पे 50 बगैर किसी नुकसान के। बड़ी उम्दा ओपनिंग पार्टनरशिप लेक सिटी पैंथर्स की। यूएमटी मार्कोर्स का बुरा हाल था 50 तक पहुंचते हुए, उनने 4 विकेटें गंवा दी थी। इसे सकलैन मुश्ताक ज़्यादा खुश मेंटोर हैं। और इस मैच में वापसी करने की ज़रूर कोशिश की थी, खुद को खेल से बाहर होने नहीं दिया उस साद मसूद की इनिंग्स की बदौलत यूएमटी मार्कोर्स ने, लेकिन अब जल्दी विकेट हासिल करना होगी, उसके बगैर चारा नहीं होगा। क्योंकि रन ज़्यादा नहीं है मरीना, इसमें वो कंटेन नहीं किया जा सकेगा। पुल शॉट खेलना चाहते थे, मौका है फखर जमान, 10 बरदार हो गए। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी झिझके अब्दुल समद, उनका पहले ख्याल था कि शायद फखर जमान जो हैं वो आ जाएंगे पीछे को भागते हुए। इमरान जूनियर को बॉलिंग पे लाया गया, आउटसाइड ऑफ स्टंप ये गेंद था, एलिवेशन हासिल की लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं हासिल किया। बहुत तेज़ी से निकले ज़रूर थे फ़खर जमान बाउंड्री से, लेकिन लकी रहे उमर। ओ बोल्ड हो गए, इनसाइड एज, काम तमाम। ये अनमोल विकेट अपने पहले ही ओवर में ली इमरान जूनियर ने और पेस पे बीट किया सिद्दीक को। ये लेंथ थी नहीं ये शॉट खेलने वाली, पिछले गेंद से थोड़ा सा ज़्यादा आगे गिरा हुआ ये गेंद था। लाइन अच्छी थी, रूम था नहीं उमर के पास, गलती कर बैठे ये बड़ी शॉट के ताकुब में। और इमरान जूनियर जिस चीज़ की तवक्को कर रहे थे इफ्तिखार, वही उन्होंने डिलीवर किया। जानते हैं उमर सिद्दीक, गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से उन्हें ये नुकसान उठाना पड़ा और भारी नुकसान। 30 रन बना के वापस लेक सिटी पैंथर्स, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 52।
हैदर अली आई दौरान फील्डिंग कुछ देर के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन वो बैटिंग करने अपनी पोजीशन पर आए हैं। 1 डाउन। इन दिनों ये अपने बेहतरीन T20 के भी दौर से गुजर रहे हैं, जो खुशाइंद बात है। स्लिप को भी बुलाया गया हैदर के लिए। बैकफुट पर खेला, अच्छी इब्तिदा इमरान जूनियर को मिली। जिस तरह मरीना जिक्र कर रही थी कि लेंथ नहीं थी पुल करने के लिए, और गेंद स्किड करती हुई गई। बिल्कुल, इसी पिछली गेंद पे इनको चांस मिला, वो भी फोर्स शॉट थी, ये लेंथ पिक नहीं की, जबरदस्ती बाउंड्री हासिल करना चाह रहे थे। थोड़ा सा रिकैलकुलेट करना चाहिए था उमर सिद्दीक को, क्योंकि वो बेहतर फॉर्म में थे। ये एक केयरलेस शॉट कहना पड़ेगा उमर सिद्दीक की जानिब से था। निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। अच्छी फील्डिंग ओवरऑल यूएमटी मार्कोर्स ने की, और ये अच्छा नजर आया। सादात छाए हुए हैं हर तरह से। यार हर बार ये बैटिंग कर रहे हूँ, बॉलिंग या फील्डिंग भी पॉइंट पर, तो ये वो जो कमसिन शादाब थे, ये उन्हीं की याद दिलाते हैं। सरासर उनका चरबा लगते हैं। शादाब खान जो हैं वो ऐसी फुर्तियाँ उसके लिए जाने जाते थे पॉइंट पर। एक बार फिर खराब शॉट, इस बार पुल करने के लिए गए, बहुत भार से ये गेंद को तकरीबन खींच लाए थे अपनी लेग स्टंप के ऊपर हैदर। खुशनसीबी के 2 रन के साथ उन्होंने अपना आगाज किया। 8 के बाद 53 पर 1, 54 पर 1 राधा। Yeah, that's one way of keeping yourself warm. The medicine ball that Mubassir was using. Otherwise, it's been pretty cool. Iftikhar has kept it tight from one end, and that has led to the demise of Umar Siddiq. Played really well for his 30 runs of 26 deliveries. At the same stage, UMT Markhors were 47 for 3. Shajil hits it hard, but straight to the fielder. Shah Faisal, happy, very chilly evening. Happy evening, good evening. It's chilly, but the action has been hot. You have to say Sharjeel is got himself into a bit of a hole, considering what kind of ball striker he is. Scoring at less than a run a ball. The new ball has come and gone. The power play has come and gone. He'd have to do it a different way than what we know how Sharjeel used to play. Wide signaled. It's been unlike Sharjeel Khan. 22 deliveries for 18. They bowled well to him actually, within his body. Kept it tight, mixed it up, ball outside the off stump. The bowlers have not been predictable when bowling to him. They have a different plan to different bowlers against Sharjeel. We saw Akif using 2 slips for him. And then when Nisar was bowling, they had 2 people at square leg and mid wicket. So different plans keep him in that guessing zone. But he can't afford to give it away now. He'd have to forge a partnership with Haider. Umar Siddiq was looking very good, but he lost his wicket. Actually, he was outscoring Sharjeel. How often do you say that about the partners that have opened with Sharjeel? He's really struggling in this tournament, Sharjeel, looking to spend some time. It's very hard to rule out champion batters like Sharjeel. So yeah, before you think anything different about him, just hang tight. He's still in the middle. No run, no run. Well done, Fakir bhai, well done.
They still require 108 runs of 69 deliveries at 9.39 runs per over. Remember that. There will be tension in that camp. Saklan Mushtaq, the great Saki bhai. Is it tension or is he just warming himself up a little? I think it should be pretty warm indoors where he is in the changing rooms. Still, he's got the beanie. Spent a lot of time in England, so will be pretty used to the cold. Early summer in England, April and May. It's very cold. So you mean it's just tension? No smiles whatsoever. We'll talk more about it. 9 done, 57 for 1. UMT Markhors have kept it tight the last few overs, but BT Properties, that's a barrier town who goes global and south of the bay, they're making a world-class gated community. Superb. So they don't want to be leaving too much for the later order batters. We saw what happened in the previous game. They don't want to do that. They need to up the ranking a little. They need to up that run rate a little, which is 6.33 at the moment. Faisal. Probably they'll be looking to Sharjeel, who spent time in the middle now, 23 deliveries. You're absolutely right. We're approaching the halfway stage. The run rate, the required run rate, approaching 10. To maintain the average of 10 for 10 or more overs generally is not very easy. It's a big over. Let's see how Sharjeel goes. He looks rusty. This is his third inning in this tournament in 4 games. First game he didn't play. Then scored 14 of 10 against Dolphins. 5 of 8 against Lions. And here also looking rusty, not getting from the middle of the bat. Yeah, the Sharjeel of old would have put that ball away all day long. Angling in onto his pads. Strong wrists and forearms of Sharjeel would send this ball soaring back in the day. He's not going to get that. That's definitely going down, and a chance at non-strikers. This boy Saad Masood is all over the Panthers with the bat, with the field, and bowling yet to come. Yeah, well, I'm pretty sure he's got a role to play with the ball. How agile he is. Anticipation. Sliding down. Sharjeel once again late on it. Was loping. Before he realized, Saad swooped on it. Would have still got in, but made him hurry. Wide signaled. Sharjeel Khan, the reflexes maybe not the same as they were. Once you don't play quality cricket, it tends to happen to you. It's very painful to see champion players go through phases in their career, reach peak, and then the slide comes. And when it does come, it's very painful for the fans, for the viewers to see that. But it does happen to everyone. It's just a player's call when he thinks he should call it today. But yeah, we've seen many great players towards the back end of their careers. And they're not the same as they used to be in their pomp. It's a cycle of time. It happens to everyone. Definitely. Here's one selector keeping an eye on the talent. Saad Masood, he would have definitely had an eye on him. Mr. Aleem Dar pulls this one, but again no timing. He's struggling clearly. Well done, bro. Here you make a good point. It's up to the player when he decides.
But is it easy to decide? Not at all. It is not very easy. Probably the toughest decision. Well, it's a bit skiddy, Aleem Dar reckons. He's a good off spinner himself, but he made the decision nice and early because then he turned to umpiring when he was pretty young. Another very good over. As far as UMT Markhors are concerned, only 5 runs of the over, 10 gone, 62 for 1, and it's time for everyone, especially the management and players and us, to have a drink break. Chilly evening in Rawalpindi, but it's very clear here. We had unbroken sunshine all day. This run chase needs some impetus. Sharjeel 19 of 26 and Haider Ali 5 of 9 looking to overhaul this target. The required run rate had just gone up above 10 in the last over before the drinks break. Umar Siddiq was looking nice, but then he had to be dismissed. Imran Jr., the pick of the bowler so far with a wicket and just 8 runs of his 2 overs. They've kept it tight. Most of them, other than Nisar, who's gone for 30 in his 3 overs. And there's a change in bowling now. Akif Javed being brought back. He bowled 2 overs for 13 runs. They're certainly now looking for a wicket. Sharjeel Khan, we all know what he is capable of. They've got a field set for him on the leg side, deep square leg, fine leg in place, a mid wicket in place, and a long on in place. That's a quick one. That's a sharp bouncer. One of the over definitely, but that's a good way to start the over. Wake him up. Clearly surprised Sharjeel. Did he roll his fingers over it? Sharjeel wasn't expecting it, but it died on the way to Khwaja Nafe. No, it's really actually banged in.
probably just hit into the pitch bouncer, taking pace off. Clearly surprising Sharjeel. Connection. And the result too for Sharjeel Khan. Finally he's found that middle of the bat for 4. This is first boundary. It already hit a 6. This is the kind of stroke that we associated with Sharjeel Khan when he's at his very best. Had to fetch it from right across almost the 4th off stump line, but he picked it up early, the length. Just the one bounce over the fence. He needs to do that more often now to bring that run rate down. Ah, he's knocked him over. Revenge taken. The very next delivery, Akif has bowled Sharjeel Khan. Another low score for him, 23 of 28. And it's a big wicket for Akif in the context of the game. He was brought back exactly for this. Yeah, just the roll of the fingers. Look at that grip on the ball from Akif Javed. Sharjeel went through with the strokes way too early. The ball never arrived. And when it did, the bat could not come anywhere close to it, and it rattled the off stump. Sharjeel's knock has come to an end. Lake City Panthers 66 for 2. It has been a good day for the youngsters as far as batting is concerned. We saw Qasim Akram played a good inning. Saad did, and now it's up to Mubassir Khan. He's got the talent, he's got the skill. 376 runs. Average needs to go up. So does strike rate, 120 at the moment. But the age definitely is on his side. Just 22 years of age. Good bowling. Outside the off stump, beaten. You'd feel that Mubassir hasn't cracked this format just yet. He had a run in the PSL as well. Have a look at this though. This is classic piece of bowling. Great deception from the tall fast bowler into the pitch. A roll of the fingers. And Sharjeel may consider this ball kept a bit low, but he was undone by the lack of pace on it. So he went through with the stroke pretty early. Mubassir had a nasty little injury scare earlier. Good to see him back. And it's a very important phase of his cricketing career, Mubassir. He has played enough cricket at this level, domestic level, just like Qasim Akram we spoke about in the previous game. And now probably is the time when these two, Qasim Akram and Mubassir, to start delivering consistently, start winning the games for their teams wherever they play for. This is an opportunity. Qasim had the opportunity in the previous game, almost got his team home. So probably now is the time that in their career they should be at their very best. He's looking for the 2. Yes, he's coming back for the 2. नवाज भाई It's a good start for him. Confident start. 11 done. 68 for 2. Right, time for some left arm spin in form of Mohammad Nawaz. He's also making a comeback at this level. So every game is very important as far as he's concerned. 199 wickets.
best of 5, 425, 24. A good economy of 7.63. But Haider Ali, eyes would be on him, Shah Faisal, who started to look good in this year. Talk about the Quaid-e-Azam Trophy, and now in this season he's improved a lot. Looks fitter, looks good with intent, looks to value the wicket, looks to hit big also. So it's a good combination when you start valuing the wicket and also start hitting big. So the blend of strike rate and average, he's improving on that. Calm down, Ali. You know what strikes after all these praises and all that build-up. I say what I see. Good luck, Haider Ali. Quickly rotates the strike. Yeah, Haider Ali has been playing well lately and realizing some of the potential that he'd shown earlier on in his career. I'm not just saying it, I'm backing up with the numbers too. The strike rate 149.74 this year in comparison to the remaining years. 2020 was the year when he had strike rate of 157, and after that it's this year 2024. We'll talk about average later. Yeah, Haider's problem had been consistency, so the average is also up 32. In previous years it was languishing under 20, under 25 even. But yeah, that's better with higher strike rate, more consistency, good average. Thank you very much. Thank you very much, Ali. Or we should both thank Kamran Muzaffar. Two is the call. Mubassir not interested, although Haider Ali was. Good ground coverage. Haider is disappointed. The fielder had to come a long way. It was in the pocket at mid-wicket. Probably if Mubassir had gone real quick, he might have had a chance to come back. No run. Haider really wanted to go for that second run last time when he played that ball in the pocket. Have a look at both these batters. Mubassir also ran hard, but his turn was slow. Touch and go maybe. Probably just a decent call. Absolutely, I agree. I think it was a good call not to come for the second, because they do need a partnership. And it would be ideal if these two can do it, the two youngsters. Saad Ali, Danish Aziz, sorry, still to come. Eager to be in the action. That's enormous. That is big, very big. Into the stands. That's Haider Ali we know. That's Haider Ali we love. Absolutely cracking blow to close out over number 12. It's 78 for 2. What a strike that was from Haider Ali. Last ball, last over. He sent the ball soaring into the empty enclosures, almost 20 yards back, down on one knee, and bang, and it goes and goes and lands 10 rows back. Probably the umpire will want to have a look at the ball as well, as it crashed into that concrete terraces. Time for a change of voices in the comm box as well, whilst there's a little hold up in play. Salman Butt will be joined by Tariq Said.
शुक्रिया शाह फैसल। अभी तक तमाशाई जो हैं वो किसी टीम को भी जाहिर है बहुत ज़्यादा फैसला कुन पोजीशन में नहीं देख रहे। हैदर अली की मौजूदगी जो है ये तकवीयत का बायस है। अच्छे स्पिन हिटर ये शुरू से ही रहे हैदर अली। ये मामूल का मंजर है इनके लिए यहाँ रावलपिंडी में पिछले एक हफ्ते से सरवर आफरीदी विकेट लेते रहे हैं दरमियानी ओवर्स में आकर, और आज इनकी टीम को इससे ज़्यादा ज़रूरत कभी नहीं थी पहले। अच्छी फील्डिंग शहजाद की, एक ही रन बन सकेगा। सलमान भट्ट कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। सलमान कीजिएगा मवाजना, किस टीम को आप समझते हैं कि इस वक्त उनकी नाक आगे? देखिए इस वक्त जो हालात हैं मौजूदा, 47 गेंदों में 85 रन की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इस टाइम मैच तब तक बैलेंस में है जब तक हैदर अली क्रीज पे मौजूद है मुबस्सिर के साथ, क्योंकि ये वो पेयर है जो इन रन्स को कर सकता है। अगर यहाँ विकेट गिर जाती है तो फिर बिलाशुबा जो है मार्कोर्स इस मैच में आगे होंगे। ये बड़ा ज़रूरी कि हैदर अली कैसा खेलते हैं इस इनिंग को। इस बार शानदार शॉट है, कवर के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और 4 रन्स। और यहाँ पर ज़रूरत भी है रन्स की। ये वो जगह है जहाँ पर अक्सर मैचेस में चेस में टीमों से गलतियाँ हुई हैं और यहाँ पे विकेट्स गिरी हैं। और अभी भी 2 नए प्लेयर हैं क्रीज के ऊपर। अभी तक तो मैच किसी का भी है। ताकतवर बैट्समैन हैदर अली ये अपने होम पिच पर खेल रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, और यहाँ पर बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है यूनाइटेड का। सकलैन मुश्ताक जो है चाहते हैं कि और ज़्यादा बाउंड्रीज आएँ जल्द अज जल्द, क्योंकि मैच बड़ी अहमियत रखता है उनकी टीम के लिए। जी हाँ, और इन दोनों को वो करना है जो आज हुसैन तलत और मोहसिन ने किया। वो पार्टनरशिप इन ओवर्स में जो है वो प्रेशर उतारती है, और एक पार्टनरशिप के मुंतज़र हैं ये। ओपनर्स अच्छा खेले लेकिन जितना प्रेशर उन्हें ऊपर से डालना चाहिए था वो उतना डालने में नाकाम रहे, और उसकी वजह ये भी है कि यूएमटी मार्कोर्स की जो बॉलिंग है वो बहुत शानदार है। जी हाँ, वो जो मोहसिन और हुसैन पार्टनरशिप थी उसमें ख़ास तौर पर जो मोहम्मद मोहसिन थे, मिडिल ऑर्डर में किसी भी नौजवान को ऐसी बैटिंग करते हुए ये कम ही हमने देखा है। ख़ास तौर पर T20 क्रिकेट में, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका तवाज़ुन, उनके खेलने का अंदाज, कंट्रोल, शॉट्स प्ले, स्पिन पे भी महारत, हिटिंग की। बड़ी बारीक बीनी से आपने चीज़ों की निशानदेही की है, और मैं इसकी वजह क्योंकि लाहौर से ताल्लुक़ है उनका भी और मेरा भी, बहुत ज़्यादा क्लब क्रिकेट खेलते हैं। टूर्नामेंट्स के मैचेस तकरीबन कह लीजिए कि एक प्लेयर जिसको एक आदी हो गया हुआ है मैचेस की सिचुएशंस को डील कर करके, और यही वो क्लब क्रिकेट का फ़ायदा है, ये यंगस्टर्स को उठाना चाहिए। और इसीलिए जब आज उन्हें मौका मिला तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई नया प्लेयर खेल रहा है। मारने वाले गेंद को उन्होंने मारा, स्ट्राइक रोटेट किया, और वो कॉन्फिडेंस जो था वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी नज़र आ रहा था। तो कुछ इस टूर्नामेंट में कुछ उभरते सितारे नज़र आ रहे हैं, जैसे आप हसन नवाज की बात कीजिए। ये समरी इस मैच की, यहाँ यूएमटी मार्कोर्स की टीम 163 रन बना सकी। 105 पर उनके 8 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन साद मसूद ने मुकम्मल तबाही से बचाया, नाकाबिल शिकस्त रहे। और उसके बाद लेक सिटी पैंथर्स की टीम खेल में मौजूद है, शर्जील और उमर के जाने के बाद भी। जी हाँ, और शर्जील 23 रन 29 गेंदों में, ये वो चीज़ है जो आप अमूमन देखने को नहीं मिलती। अक्सर इनके रन्स इनके बॉलों से कई ज़्यादा होते हैं। और जब हमने बात की कुछ नए सितारों की, तो यहाँ पर हैं जिन्होंने वो सितारों को चुनना है, हलीम डार साहब। जहाँ हलीम डार जो हैं नए किरदार में हैं, सिलेक्शन कमेटी के बड़े अहम रुकन हैं। बड़े गौर से नज़रें जमाई हुई हैं उन्होंने नए टैलेंट
को हंट करने में, और साद ने आज एक बड़ी शानदार इनिंग खेली। और मोहसिन हो गए, साद हो गए, हुसैन तलत ने एक अच्छा केस बिल्डअप किया अपने कमबैक का, जिस शानदार तरीके से वो खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और इस बार गेंद थाई पैड पे था, जिसको बहुत कंट्रोल के साथ खेला हैदर अली ने गैप में और 2 रन हासिल किए। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ये बहरिया टाउन चैंपियंस कप T20 2024, और मौका है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए। और ख़ासियत इसकी बहुत सारी खसूसियात में से एक ये भी है कि PSL का ड्राफ्ट आने वाला है, और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार करेंगे। हमने कुछ वक्त पहले इधर मोहम्मद अकरम साहब को देखा, जो कि ज़ल्मी को हेड करते हैं, और यकीनन वो भी यहाँ पर टैलेंट को हंट करते हुए ही यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। जी हाँ, क्योंकि PSL ड्राफ्ट के जो दिन हैं वो अब आने को हैं, बिल्कुल सर पर आ गए हैं। तो ये साद मसूद हैं या मोहम्मद मोहसिन हैं, मुझे बड़ी हैरत होगी अगर टीमों ने इनका इंतखाब नहीं किया। ये बड़ा शॉट मारने की कोशिश और बहुत शानदार एफर्ट फील्डर की, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। 4 रन हैदर अली के लिए, और इस चौके के साथ लेक सिटी पैंथर्स 91 पे पहुंचे 13 ओवर्स के अख्ताम पर। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत कुछ तलाश कर रहे हैं, और तलाश करने वालों की फहरिस्त में हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी एक साहब बैठे हैं जो इतला पहुँचा सकते हैं। अली नूर साहब जो हैं, ये बड़ी गहरी नज़रों से यंगस्टर्स को देख रहे हैं। इतनी गहरी नज़र, इतना महव है कि अपना खाना भी नहीं खाया इन्होंने अभी तक। जहाँ ये अली नूर पस मंजर में है, हमारे प्रोड्यूसर। अली के खाने को दिखाना लाजमी है, ये दिखाएगा कि कितनी तवज्जो के साथ ये अपने काम में महव है। और ये खासियत हमारे डायरेक्टर साहब की भी है कि जो बात होती है फौरन दिखा देते हैं उसको। साद आए हैं वापस, और यकीनन यही वापस लेकर आए UMT मार्खोर्स को इस मैच के अंदर, और इन्होंने इस फाइट को यकीनी बनाया अपनी उस शानदार इनिंग्स के ज़रिए। इस एज में बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई है इन्होंने। यहाँ विकेट मिलने का चांस हो सकता था, लेकिन शायद ये गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच हुआ। लेकिन मुबस्सिर खान बड़ा रिस्क ले रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, क्योंकि इनको चाहिए होगा कि हैदर जो हैं ये उन पर दबाव कम करते जाएं। एक बार फिर स्लो करना चाहते थे, लेकिन वो लेंथ नजर नहीं आई, इसलिए चेक शॉट खेलकर 1 रन हासिल किया। अच्छा आगाज मिल गया साद को। अब बॉलिंग में कल खुशदिल शाह ने जिस तरह अपने बैटिंग इनिंग्स कॉम्प्लीमेंट किया था, अपनी बॉलिंग से क्या ये कर सकते हैं साद? आज वही कारनामा, पहले मैच की प्लेयर ऑफ द मैच था। क्यों नहीं, इससे पहले ही एक मैच में अपनी बॉलिंग के बलबूते पे मैन ऑफ द मैच हुए हैं, और ये देखिए अच्छी जोन में बॉलिंग कर रहे हैं लाइन के अंदर। ये मामला खतरनाक हो सकता था। डायरेक्शन अच्छी है इनकी। ये शॉट बड़ा है और इसमें जान भी है, ये जाएगा बाउंड्री से बाहर और देगा 6 रन लेक सिटी पैंथर्स को। ये अच्छा बॉल है, लेकिन जब बैटर एक रिस्क लेने के मूड में होता है तो फिर आर या पार। ये ऑफ साइड में ये जिस तरह डीप कवर पॉइंट था, लॉन्ग ऑफ था, थोड़ा सा वाइड कर सकते थे, और भी फ्लाइटेड गेंद जो है बिल्कुल उनके बल्ले की मार में आ गई।
काफ़ी देर से कोशां थे, फिर पुल करने के लिए गए, लेकिन इस बार एक ही रन मिला मुबस्सिर को। लेकिन बेहतरीन ओवर ये मैच की सूरत हाल के लिहाज से 99 पर 2। एजाज अहमद जूनियर, खुर्रम शहजाद सबसे ज्यादा तजुर्बा इस ड्रेसिंग रूम के अंदर, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई इन सब ने। जी हाँ, यहाँ पर समंदर है नॉलेज का और बहुत सारा तजर्बा, बहुत सारा कोचिंग का तजर्बा है मिसबाला की कोचिंग टीम के अंदर। एजाज जूनियर जो हैं उनका बड़ा बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है एज अ हेड कोच ऑफ डोमेस्टिक टीम्स। कुछ ज़रूरी बात लगता है समझा रहे हैं खुर्रम शहजाद को। जहाँ और उसमें वो जो जुगत का पहलू है वो भी अक्सर बेशतर शामिल होता है। और ये अच्छी हिट बिल्कुल सीधा बॉलर के सर के ऊपर, और ये 4 रन्स यहाँ पर होंगे। अच्छा आगाज मिल गया मुबस्सिर को। जी हाँ, यहाँ पर अंपायर को फोन अ फ्रेंड की ऑप्शन लेनी होगी, चेक करना होगा उन्हें अपने साथी से जो थर्ड अंपायर हैं कि ये हुआ क्या है। और इस रीप्ले में यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 रन हैं ये। सही है नवाज भाई, नेवर माइंड नेवर माइंड नेवर माइंड, विकेट है विकेट है विकेट है जरा। 4 रन से इशारा अंपायर फैसल अफरीदी का। अच्छा आगाज ओवर का लेक सिटी पैंथर्स के लिए, और ये मजीद बेहतर हो गया है। ये आगाज एक बड़ा छक्का मिड विकेट के ऊपर स्टैंडों के अंदर। मुबस्सिर खान अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए और फिट भी हैं। जब इनके बल्ले से गेंद निकलता है तो फिर वो दूर ही जाता है। यहाँ फिर से फ्लाई डेड गेंद मिली और अपने इस जोन में इसको हिट लगाई, बुरी तरह पेश आए, इसके साथ डिस्टर्ब हुए, खुद को खतरे में महसूस किया था तमाशाई ने। जी हाँ, वैसे उनके दाएं बाएं खासी जगह थी, हरकत से बचत हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर नवाज का बचत करना बहुत जरूरी है। बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, इस बार गेंद कराने से पहले ही निकल आए थे मुबस्सिर। और यहाँ पर जो है गेम अवेयरनेस यही है कि अब आपने 10 रन 2 बॉलों में कर लिए हैं तो इस ओवर को 14-15 पे ले जाया जाए। अगर बॉल मिले तो जरूर मारे बड़ी हिट, लेकिन जबरदस्ती ना करें। अब अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान। पहले हाफ में 2 रन आउट्स हुए थे, लेकिन बैटिंग में बेहतर डिसिप्लिन रहा है। रनिंग में यहाँ पैंथर्स का दोनों ही इसी इलाके के हैं, हैदर मुबस्सिर। दोनों बॉलर्स भी इसी इलाके के हैं और मैच भी इसी इलाके में हो रहा है। नवाज और साद का दोनों का ताल्लुक पिंडी से, दोनों बैटर्स का ताल्लुक पिंडी से, और मैदान पिंडी स्टेडियम का सिर्फ आप और मैं यहां से नहीं है इस वक्त। और एक और छक्का होगा, बड़ा छक्का, और मुबस्सिर खान के बाद हैदर अली अब आ गए हैं सामने और एडवांटेज ले रहे हैं इस ओवर में। पूरा प्रेशर नवाज और यूएमटी मार्खोर्स के ऊपर डाल दिया गया और मैच कदरे आसान नजर आने लगा। 31 गेंदों में 47 रन बाकी है। छठा छक्का था। अब इस पार्टनरशिप्स में यह है छक्के भी वो ज्यादा आने लगे हैं। दरअसल चौकों से ज्यादा छक्के आए इस पार्टनरशिप में, 4। बहुत ही ताकतवर
स्ट्राइकर होने का सबूत दे रहे हैं, खड़े खड़े बाउंड्री को क्लियर कर सकते हैं। और इनके जो छक्के हैं हैदर अली के, ये रोप के आसपास नहीं गिरते, ये अक्सर जो हैं ये स्टैंड के पार जाते हैं। बिलाशुबा ये दोनों काफी पावरफुल हिट्स मारते हैं। ये देखिए इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन कीपर उसे कलेक्ट ना कर सके। ख्वाजा नाफे, ये ओवर का अख्ताम और इस ओवर में 17 रन आए हैं और लेक सिटी पैंथर्स पहुंचे 118 रन पे 2 विकेट के नुकसान पर। सिवाय विकेट्स लेने के अब कोई चारा नहीं रहा यूएमटी मार्कोर्स के लिए और अब गए हैं अपने फास्ट बॉलर मोहम्मद इमरान की तरफ कि आइए और काम दिखाइए। और हैदर अली जो है वो 3 साल के बाद वापस अपने उस स्ट्राइक रेट पे पहुंचे हैं जहां पर वो उन्होंने स्टार्ट किया था। 150 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट था आज से 3 साल पहले और बीच में थोड़ा सा हट से गए थे अपनी उस रफ्तार से और अब वापस पकड़ा है उसको। यहाँ अब खासी हद तक ये मैच इनके हाथ में है और अगर कोई संगीन हादसा पेश नहीं आता, खुद ऐसी गलतियां नहीं करते कि अगली टीम को रास्ता मिल जाए, यहाँ पैंथर्स को कामयाबी हासिल करना चाहिए। फिर पुल शॉट है, दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर की मोहम्मद नवाज ने, हालांकि गेंद उनके उल्टी तरफ जा रही थी। यहाँ आज ये भी काबिल दाद हैं ये शायकीन जिन्होंने, कोई भी इनमें से गया नहीं है मैदान छोड़कर। क्रिकेट अच्छी हुई है, बेहतर म्यार देखने में आया। ये एक और बड़ा हिट है और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। 4 रन्स और मुबस्सिर खान जो है इस मैच को यूएमटी मार्कोर्स से दूर ले जाते हुए। इन 4 रन्स के साथ जो बाकी रन्स रह गए हैं वो 41 हैं और ये देखिए पिच्ड अप उस जोन में था ये बॉल जहां पर बैटर जो हैं वो इसको जाने नहीं देते क्योंकि मिड ऑफ ऊपर थी। सो एक सेफ शॉट था ये। बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं मुबस्सिर खान। और ये पुल शॉट इस बार उतनी अच्छी आवाज नहीं आई और यहाँ 2 रन्स पर इक्तिफा करना पड़ेगा। एक बार फिर अच्छा आगाज हो गया है इस ओवर का। पहली 3 गेंदों पर 7 रन्स बन चुके हैं। 8.67 की शरह जो है हर ओवर में चाहिए है। हालात मुकम्मल तौर पर इनके हक में है। जी हाँ, और बात पार्टनरशिप की थी हमने कि ये एक पार्टनरशिप इन्हें चाहिए और यही 2 वो बैटर्स हैं जो इस मैच को एक तरफ लगा सकते हैं और काफ़ी हद तक अपने काम की अंजाम दे चुके हैं ये। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर विकेट्स ना गिरें क्योंकि ये मोमेंटम बड़ा ज़रूरी। इस बार हैदर अली इनको तगदाव करना पड़ी लेकिन आ पहुंचे अपनी क्रीज में। इफ्तिखार खुद थे लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर और थोड़ी ग्राउंड कवर करना पड़ी। दोनों बैटर्स जो हैं ये अच्छे रनर्स हैं और ये देखिए अर्जेंसी थी, जैसे ही भागे इनका इरादा 2 रन्स लेने का ही था। और एक और अच्छा ओवर ये साबित हो रहा है लेक सिटी पैंथर्स के लिए। और ये 4 रन्स होंगे और इस ओवर में काफी हद तक गेम अपने हाथ में कर ली है लेक सिटी पैंथर्स ने। मजीद 4 रन्स और ख्वाजा नाफे
उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, डाइव किया, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा सके उससे। 33 रन्स बाकी हैं और 25 गेंदें। इस ओवर में लेंथ और लाइन ये दोनों पर ही ये पूरा उतरे नहीं है उस म्यार पर जिसकी की तवक्को रहनी चाहिए थी। जिस तरह आज आखिरी ओवर नौजवान उबैद शाह ने किया अपनी टीम के लिए। इमरान जो हैं अब ये ना तजुर्बेकार नहीं है, इनसे तवक्को की जानी चाहिए। और ये हवा में खेल गए, इस बार आहिस्ता गेंद की थी और उसका सिरा मिल गया। फखर जमान ने इस कैच को आसान बनाया और यूं स्पिन बॉलर्स को जो ये तारे दिखा रहे थे सरे शाम मुबस्सिर, फास्ट बॉलर पे चलते बने। तारिक भाई, ये अभी एक गेंद रहता है, एक सवाल है आपसे कि ये जो कोच खड़े हैं तीनों, ये ठंड से खड़े हैं या टेंशन से? लेक सिटी पैंथर्स की पोजीशन देख लीजिएगा जवाब देने से पहले। यहाँ पोजीशन तो जाहिर है कि उनकी बेहतर है, लेकिन वो दोनों ही सबब हो सकते हैं। नहीं, एक की चॉइस है बीच में, वो जाहिर है वो टेंशन की वजह। 16 ओवर्स के अख्ताम पर 131 पे 3। Very enjoyable day and evening of cricket here at the Rawalpindi Cricket Stadium. Barrier Town Champions T20 Cup. The very exciting game. Lake City Panthers were at the back end of their bowling innings. Felt like they'd let things go quite far, but then their batting effort had been very good. They require another 33 in the last 4 overs. Job is not done yet. Saad Masood. That was really smacked hard, and in this cold, you have to be a brave man to attempt even a catch. He's feeling the pinch. Good evening, Marina Iqbal. Good evening, and what an exciting turn of events here. Again, trying to force the shot. They were right on the course, but this huge wicket and broken partnership have brought UMT Markhors in the game. Cool as cucumber. Fakhr Zaman under that catch. Googly smashed by Danish Aziz. Well, if anyone can turn this around for UMT Markhors, it has to be Saad Masood. The kind of day he'd had earlier with the bat. Absolutely sensational knock. His team needs him to bowl a couple of really quiet overs. 2 singles of the first 2 deliveries. This is gone. This has been dismissed out of its presence into the stands. Haider Ali does pack a punch. Saad, he's a good bowler, but still a youngster. Feeling the pressure, dropping it short, and Haider Ali just opened the front leg, squared up nicely, and straight out of the middle of the bat, it sailed away. He's well settled and a lot of bottom hand coming into play. This is not the right length. We discussed earlier how good Haider has been this year. And more evidence of that, just opening up that offside, it really traveled quickly to the sweeper. But unfortunately for Haider, straight to him. Just a few yards either side of him. He would have earned the boundary. Yeah, he was looking to go aerial towards that extra cover. Just slightly collapsed his back leg. That's why it went straight to the deep point. Oh, Danish has helped it on its way. Work to be done.
And very well done, restricting Danish to just a single. But runs are flowing, and I think Lake City Panthers would think that this is well under control now, this run chase. The game is still on, 23 of 19. Needs to finish well, Saad here, without conceding a boundary. This is edgy, over the top, will bounce away to the boundary. Will make it a very, very big over for Lake City Panthers. There was width on offer, and Haider didn't need a second invitation. 17 done. Lake City Panthers 145 for 3. Well, last ball, last over, wide. Haider was allowed to free his arms, although not where he intended. But he swung the bat so hard, it flew off the edge. There was a very animated conversation at the end of that over between Haider and Danish Aziz. Kevin to his final over, and the ricochet. Very, very good cricket. Haider Ali was alert to the situation. Yeah, good presence of mind. He needs that strike. Lake City Panthers need him to be on strike. 45 of 25 deliveries, leading Lake City Panthers today again. And just inches away from the win. Danish, he's also an experienced one. Have a look at that. He wants to win. He wants to finish the game. And he's having a clear conversation with Danish. What areas to look for, what ballers to target, and how to win it. And an animated fist pump towards the end. A punch of the gloves. Haider Ali is the skipper, remember? He's stepping in for Shadab. He wants to see his team home. Just 5 away from a half century. And what a good half century it would be. Well, there you go. Picks it up beautifully. Wrong line, you have to say. But Haider Ali latched onto it. And this is another 50 for Haider Ali. What a wonderful knock from this youngster. Finding his feet in 2024 and leading from the front. Well played, Haider Ali. He means business. Akif just straying down the leg. Idea was to cramp him for room. But off the pads, easy pickings for Haider. You can see his eyes lit. Akif just wanted to cramp him, but way short enough. And got the treatment he deserved. That's a good response, but it's not a bowler's game. Haider Ali will pick up the boundary. All smiles for Lake City Panthers. And Haider Ali has really been fantastic with his consistency and also his strike rate. Luck favors the brave. Luck favors the prepared one. Yeah, it was a good comeback from Akif. Right on top of it. Cramping him, surprised him. It took off. But Haider luckily got some wood on it. His scores in this tournament, 54, 46, 26. And now he's got another half century, 55 not out. Once again, good roll of the wrist. Looking very calm and composed. This is a new Haider Ali that we're seeing. The resurgence of that talented prodigy that got all the attention when he played under 19 cricket. Yeah, I agree with you. He has realized very quickly what his true potential is and sort of fixes he need in terms of the mindset especially. No doubt that he has tremendous talent. That captaincy also giving him a touch of maturity. He needs to carry himself. But it's good to see him going to finish matches. That's what was missing. Now Danish
Aziz joins in on the fun, and it is ending in a jiffy here at the Pindi Cricket Stadium. Lake City Panthers are romping home thanks to this partnership. Once again, a quick one. This time it's Danish Aziz who puts Akif to sort. Akif, devoid of ideas, not the right length to be bowling, especially to Danish and Haider as well. Way too short. Danish had ample time to guide it behind square. Had it all in control. And what a run chase it has been. Just 3 needed now. Danish on strike. Akif with last ball of this over. Play and a miss. Oh, take that. Khwaja Nafe hit bang on the kneecap. It looked like it. He's in agony. Agony of physical pain. Agony of being on the verge of losing a game of cricket. 18 done. 162 for 3. Very entertaining evening of cricket. This is Barrier Town Properties. Barrier Town goes global. A monumental achievement as they're developing a world-class gated community in south of Dubai. And Saad Masood must be thinking that it must not have been his team's night. He did his bit though with the bat. Expensive with the ball. Danish is a very prolific player of spin. Well, they'll have to wait for the winning moment. Well, they're not in a hurry. They've done their work. Just 2 required. Goes downtown. Is it big enough? Not quite. Straight into the lap of Muhammad Nawaz, and Danish couldn't see the victory. He will have to depart. Little consolation there for the UMT Markhors. Yeah, Danish wanted to finish it in style. Just trying to go aerial over, long off. Saad got the wicket, but too little too late for UMT Markhors. Good support from Danish being provided to Haider. I feel that he wasn't near the pitch of the delivery. That's why got no distance. Straight in the hands. Another one down now for Lake City Panthers. 7 for Danish Aziz, 162 for 4. Arafat Minhas, the youngster, joins his skipper in the middle. Just a mere formality, it may seem. Well, Saad Masood is not giving anything away. And just a shimmy down the ground, still not near the pitch of the delivery. Googly. And the scores are level. And it'll be very fitting if Haider Ali gets a chance to hit the winning runs. Yes, totally. Brilliant knock by the captain himself. He'll have to think about things. First loss for them, if they manage to get the single. Haider Ali has done most things right today. Started from winning the toss. And he's there right at the end. Other than that little flurry from Saad Masood towards the end.
Lake City Panthers will seal the victory. The deserved winners, and how fitting that Haider Ali, the skipper, smashes Saad Masood over the fence for a 6. Congratulations all round for Lake City Panthers. This tournament is wide open, and the undefeated side UMT Markhors have tasted their first defeat of the championship. Second win for Lake City Panthers, and a very clinical one. Winning by 6 wickets, courtesy to some brilliant batting from Haider Ali, Mubassir. They actually set the course right for this run chase, UMT Markhors. For a moment they thought it was enough on board, but it's a funny game, T20 cricket. They did bowl some overs that went in favor for the Lake City Panthers, and they pounced on in very quickly. He'll be a happy captain, finishing the game more importantly as a batter. Yes, Clan Mushtaq will be very happy. This Lake City Panthers is a young unit led by a young captain, Shadab, who has been sitting out due to some niggles, and then an even younger Haider Ali has stepped up and done a wonderful job, not only as a skipper but also being a very consistent batter. Plenty to think about for UMT Markhors. Their top 5 batters have not been coming to the fore, but this moment is for Lake City Panthers as they walk off victorious on a cold and chilly Pindi evening. We've seen some hot action here. Yeah, good entertainment for the crowd as well. UMT Markhor, they struggled, then they recovered and thought probably they got away, but Lake City Panthers, from ball 1 they meant business, and this guy on your screen, he'll be content with how the things went, registering their second win tonight by 6 wickets. All smiles. Zulfikar Babar, Wasim Jr. made a comeback, so Lake City Panthers, they're gearing into shape come the business end of this tournament. It's a double league tournament, and look at how clinical this run chase was. Umar Siddiq once again showing signs of his very good form. Sharjeel scratched around, but he didn't give it away until they forged a very good opening partnership of 52. But the innings of the evening came from Haider Ali. What a wonderful knock that was. Mubassir also took the impetus and scored at a good rate, 32 for the young all-rounder from Rawalpindi. And the target was achieved inside 19 overs. UMT Markhors tested 7 bowlers. Pick of the bowlers, Imran Jr. picking 2 wickets, 1 each for Akif and Saad. The rest were wicketless and also went for runs, only managed to pick 4 wickets. When this run chase began, UMT Markhor might have thought that they'd got enough runs on the board thanks to Saad Masood. It's brilliant, but its opening partnership slightly slow in pace at times, but at least they got to 50. Umar Siddiq looked very, very impressive once again, striking down the ground, some clean hitting, some good cricketing shots in the mix. This is when he lost his wicket. That was 52 for 1. Sharjeel was outfoxed by Akif Javed's brilliance. But then Mubassir and Haider Ali joined forces. 60-run partnership. That was the main partnership that set the course right for Lake City Panthers. Played all over the ground. Mubassir taking the charge in, putting his knee down, going for the big ones, and some clean hitting from both ends. Haider also taking the charge. He knew exactly which areas to pick and which bowler to attack. This one was miscued, and for a moment UMT Markhors thought they might be back in game. But Haider Ali, the skipper, he meant business, wanted to finish the game, and he did. Fuller deliveries went over, flying over the boundaries and over the infields. Danish Aziz with a handy 7 runs, but in the end he did fail to finish the game. But nonetheless, it was a good run chase from Lake City Panthers. This was the winning shot by Haider, who scored a brilliant 50, taking his team home. Well, the double header, back-to-back double headers, and this one 163 for 8, played 169 for 4 in 18.5 overs.
Saad Masood, the young batter from Rawalpindi, he was mighty impressive with his 63, saving UMT Markhors for complete humiliation. But then Haider Ali's knock overshadowed him, and Mubassir also did really well. Umar Sadiq looked good. Imran Jr. was the pick of the bowlers for Lake City Panthers, for UMT Markhors rather, and Lake City Panthers ran away victors by 6 wickets. A comprehensive victory. Congratulations to Lake City Panthers for their second win of the championship. After this result, that's how the standings are now. Allied Bank Stallions still on top. UMT Markhors on second. Newport Lions on third. Lake City Panther registering their second win. Have improved their run rate and points as well. Anglo Dolphins yet to win. The first leg of the double league is completed. Half of the games have been played by all the teams. Action-packed evening. Time for everyone to take a little breather, and we'll be right back with the post-match presentation ceremony. Hello, check, check, check. R1, 1, 2, hello. Okay. 2, check, 1, 2, 3, PA पे दे दे. R1, hello, hello, check. 2, check, check. Okay, okay, okay. A super performance by Haider Ali and his men to make sure that they get the second win of the tournament. And welcome to the presentation ceremony. And in the presentation party, I have with me Mr. Sajid Ilyas, Deputy Chief Executive, Barrier Town. And before we talk to the winning captain and the player of the match, who happens to be the same person, let me invite the losing captain first, Mr. Iftikhar Ahmed. इफ्तार भाई अच्छा रिकवर कर लिया था अर्ली विकेट्स के बाद, फिर कहाँ गलती हो गई? गलती मेरे ख्याल में हमने शुरू से की है, जहाँ पे हमने 2 विकेटें जो रन आउट हो गए, वहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि दोनों बैट्समैन जो थे वो मेन प्लेयर थे मिडिल ऑर्डर में, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे मिस्टेक किया हमने. अगर हम वैसे बात करें ओवरऑल आपकी टीम की, आप अनचेंज्ड गए हैं अभी तक टूर्नामेंट में, तो क्या लगता है कि आगे चेंजेस हो सकती हैं? और क्या खास वजह है इस चीज़ की? नहीं, असल में परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, मगर हमने सबको चांस देना होता है, तो इंशाल्लाह चेंजेस करेंगे, सबको चांस देंगे. और एक पर्सनल क्वेश्चन, 4 मैचेस में 3 रनआउट्स आपके, क्या चल रहा है? यार मेरे कैरियर में पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में कैरियर में फर्स्ट टाइम देखा कि 3 दफ़ा 3 मतलब रन आउट हो गए. और ऐसे रनआउट्स हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं. कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग गेम्स इफ्तिखार अहमद.
Right now, time to talk to the winning captain, who happens to be the player of the match also. I would request Mr. Sajid Ilyas to please step forward. He will present a beautiful trophy and a cash award of 25,000 to Haider Ali. 62 of just 29 deliveries, 4 boundaries and 5 sixes. And a brilliant way to end the game also with a 6. बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो एज अ प्लेयर, उसके बाद कप्तानी की बात करेंगे. कितने सेटिस्फाइड है इस परफॉर्मेंस से? जी सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपनी परफॉर्मेंस से जिससे हमारी टीम विन की है. और जैसे मेरी फॉर्म चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी यही कोशिश थी कि मैच फिनिश करके हूँ, जितना लंबा मैच को लेके जा सकूँ इंशाल्लाह मैच एंड पे फिनिश करूँ. तो यही मेरा माइंडसेट था. स्टैट्स की अगर बात करें तो 2020 के बाद हैदर ये वाहिद साल है जहाँ पे आपकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों ऑन द हाई हैं, ऑन द राइज हैं. तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है आपके ओवर द ईयर्स. जी बिल्कुल. जब आप जितनी क्रिकेट खेलते हो तो जितनी आप मेच्योरिटी लेवल आपका टाइम के साथ आता है, और अभी मुझे लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा मेच्योर हो गया हूँ और गेम अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी होगी. क्योंकि जब आप अंडर 19 से आते हो तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होता है, अपने इतने मैचेस इतना एक्सपीरियंस नहीं होता. लेकिन अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड खेल के काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, तो अभी सिचुएशन गेम की आनी शुरू हो गई. तो क्या आप कह सकते हैं क्या अलग कर रहे हैं आप अब इस टूर्नामेंट में? यही कर रहा हूँ कि बस जो टीम की रिक्वायरमेंट है, जो सिचुएशन डिमांड कर रही है, अपना मेंटली जो है पूरा वो जैसे मुझे जो बॉल मिलेगा मेरिट पे उसको मेरिट पे खेलना है और क्लियर माइंड के साथ खेल रहा हूँ. एज अ कैप्टन अगर बात करें परफॉर्मेंस बहुत शानदार है. एक टाइम ऐसा आया था जब 7 गेम ले चले थे लेकिन अच्छा कमबैक किया बैटिंग में. देखें वो लोग भी तो खेलने आए हुए हैं, वो उनकी टीम काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, हमने अर्ली ऑन आउट कर दिए थे. लेकिन ये कि थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा हम लैग किया, हमने ईजी लिए उनको, उनके 7-8 आउट हुए थे तो ईजी लिए वहाँ से. लेकिन मैं फिर भी बॉलर्स को बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि पहला मैच 191 हुआ है और वो चेज भी हो रहा था, तो उन्होंने उस हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग की है. रात के टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो क्रेडिट बॉलर्स को जाता है. चलिए बहुत एंजॉय किया हमने एज अ कैप्टन और एज अ बैटर. आपको ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग गेम्स. थैंक यू वेरी मच. Right, that is all we have from down here. Back to you guys in the commentary box. Thank you very much, Ali Yunus. Well, what an action-packed day it was. This was the second of the doubleheader. UMT Markhors eventually getting to a respectable total 163 for 8 thanks to Saad Masood, scored a wonderful half century of 63 of 39 deliveries. Osama Mir was sensational with the ball, 2 for 14. Haider Ali made sure that there were no jitters in the run chase, getting over the line. Lake City Panthers in 18.4 overs with just 4 wickets down. Wonderful blistering half century from the skipper. The points table taking shape. The first leg of the double league is done and dusted, and at the halfway stage of the group stage, Allied Bank Stallions are heading the table thanks to a superior net run rate. UMT Markhors with 6 points are equal on points, slightly lower net run rate. Nurpur Lions have found their form, and Lake City Panthers with 2 victories will also be pushing for those top 3 qualification slots. Angro Dolphins with all to do with no points. Well, we had an action-packed start, back-to-back games. Tomorrow will be a day off here at the Pindi Cricket Stadium. The action will resume on Sunday. Another doubleheader. Allied Bank Stallions will be taking on Lake City Panthers, the form teams, and then Nurpur Lions will be taking on UMT Markhors in the afternoon game. Well, I hope you enjoyed our coverage today. Plenty of action on display. We look forward to your company after a day's gap. And it's just time to say goodbye and good night from Rawalpindi Cricket Stadium. Down the track, takes the charge. What have you done? It's straight to the fielder. 50 of 33 deliveries, a wonderful effort under pressure. Oh, wow. This time he's connected it nice. And this time it's Umar Sadiq flicking one through the gap. Oh, bold हो गए. Inside edge, काम तमाम. एक बड़ा छक्का मुबस्सिर खान अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए. Another 50 for Haider Ali. What a wonderful knock from this youngster.
Lake City Panthers will seal the victory. The deserved winners